Now can you hear me? Hello? Yes, Hello? sir. Yeah. Yes, okay. Okay, yeah. Thank you guys. I had a new headphone, so need to be configured with the Zoom. Okay, so who all are in? I see Swapnal you joined, Priya, Pradyum, Vikrant, Shruti, Rajat, Supriya, Shruti, Prasad. So, hello everyone. Good morning and good evening. Good evening for Prasad. And welcome to Radical. Okay, I think few guys are still missing. 4, 5, 6, 7, 8, 9. I'm just checking who is missing. Okay, Surbi has joined. Hey, hi Surbi. Hi Mahesh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. I think one more missing. Checking. Saurabh. Swapnil, could you please check with Saurabh? Saurabh Utpal. I see he has done the registration and he has not joined. Okay, sir. Yeah, just call him because we are about to start. So who else? So Archana, do we have Archana? I think yes. No, Archana is also missing. Swapnil, one more uh, candidate, Archana. Okay, so guys, late joiners, good morning. And what's the plan for today? Okay, so we'll go through all the details, like whatever the details that we have. We'll try to set up the ecosystem. When I say ecosystem, it's like what we are going to do, what will be our way of teaching or getting the things done. Then what what's the target goal? Okay, then we'll go through the content as well, like what you can expect over the period of time of 3 months. Then like what are the different ways to communicate with each other, doubts and course content. Okay, so those who have done the registration, they are already part of a Radical Technology portal which manages all the students their data training assignments. Okay, so I will navigate through that UI as well before starting, so that everybody would be aware, like where to raise what, where they can go and check the content offline. So this is something which is newly introduced by the Radical recently. So that's an effective way to communicate, to get the content without disturbing anyone. Yeah, hi Saili. Swapnil, Archana is also missing. Archana, Saurabh, I don't see Archana and Saurabh. These are the two candidates seems to be missing. Okay, so that's what the plan is. Um, uh, let's wait for some time. Meanwhile, the interesting thing that we can do, we'll start with your introduction. Okay, so a brief introduction. I am not like forcing you to say uh, like a lot of details, but maybe your name. Everybody know your name. Maybe your background. Okay,
so that everybody will come to know like what background this guys is having. If you are a fresher, then maybe having a experience into the technology, or even if it's not in the technology, or any vertical stream that you are working with, you can mention that number of years of experience. For example, if someone asks me like, I'm Anil, I have 17 years of experience in test automation, and I worked and after completion of this course, I am expecting some change in what. Okay, so like, what's the goal you are targeting after completing this course? Okay, if I get the background, I will cover those use cases whenever I'm going to discuss any use case example. Okay, so we can start with the alphabetical order. I believe let's start with the Priya. You are first on my screen, so uh, let's let's start with Priya. So Priya, could you please introduce quickly? Yes, sir. Hi, all. Good morning. My name is Buddha Priya Shinde. Uh, I am working as automation expert in Tosca from past 3 years, Okay. and I'm expecting after completion of this course, I will be skilled up and upgraded in automation field. Yeah, absolutely, absolutely. Yeah. Thanks, Priya. Thanks for the introduction. The next one is Pradyum. Uh, Hello, Anil. Hello, everyone. I'm having around 12 years of experience in testing domain. I'm working on automation as well as manual testing. Uh, the output of this course is I'm looking for having some proper training in automation. I worked on various other tools based on Java, but I wanted to understand newer technologies and Okay. refresh my skills. Okay. Yeah. Yeah. Thanks, Pradyum. Welcome to Radical, and Thank welcome you, to the Anil. course. Thank you. Vikrant. Yeah, hi everyone. I'm Vikrant, and I come from mechanical engineering background, but I do have some experience in manual testing. Okay. So I just want to understand core Java from scratch, you can say, and I hope after completion of this course, I'll be be capable of doing manual testing. Automation testing. Absolutely. Absolutely, Vikrant. Yeah. Yeah, Thanks for thanks. the introduction. Thanks, Vikrant. Next one is Shruti. Shruti Nikam. Hi everyone, I'm Shruti. I am from Sangli and I have 4 year experience in Infosys back office. And after this course, I expected a good company with good package. Thank you. Okay. Yeah, fair enough. So, Shruti, you are in Infosys in back office, right? Yes, And 4 years. yes. Okay, fair enough. Fair enough. Yeah. Thanks, Shruti. Thank Rajat. you. Yeah, good morning. Yeah, I started my career as a developer, C# developer, and then I slowly moved into, Microsoft SharePoint application development and designing. Then I moved into database like SQL Server. I'm fond of writing SQL queries and data triggers and indexes and all those stuff. And currently, I'm focusing into analytics since last 4 to 5 years with different tools, ETL tools. Currently, Microsoft Power BI as a main data extraction tool, data transformation tool. But my interest area right now, based on the trend in the industry, I thought I should move into automation. And wherever I go into event, I mean on-site. I'd been to Europe and other countries. So participating in the customer final UAT deployment, and I came to know that automation will be the best. I mean, for me to go for a career growth in for an on-site opportunity, because automation has got a lot of demand in Europe and also in US market apart from India.
So that is the reason I want to transfer myself from analytics to automation, SDET career base. That is my goal actually. And apart from that, I want to learn the core Java very intrinsic way so that the foundation is very strong and I can go for, later, framework designing. As you said in the introduction, we'll be going through framework designing and all the stuff. So that is Yeah. my goal actually. Yeah, sure, Rajat. Yeah, thanks for the detailed introduction. Okay, who is next? Prasad. Hi everyone. My name is Prasad More, and I'm in US right now. I have 15 years of experience. Uh, Out of those few years in testing, and then some configuration management, and then now I'm into program management. However, I feel that I need to do a technical stuff rather than, program management, and that's the reason I have joined here. So after this course, I want to basically uh, learn more on Selenium and try to progress or switch from my current role. That is the target. Okay, yeah. Thanks, Prasad. Mahesh. Yeah, hi. Good morning, all. So my name is Mahesh Avle. I have 5 years experience in automation and manual testing. However, after completion of this course, I'll be able to write some backend test and see myself into some upgraded skills. Yeah. Okay. Yeah, sure. Yeah. Thanks, Mahesh. Next one is Basundara. Hello, good morning, sir. Your voice is low. Maybe just adjust your mic. I'm Vasundhara. Little bit. Yeah, go ahead. Actually, I have gap around 7 years. Uh-huh. I've completed MTech in CSE 2015. Okay. So now I want to continue with my reboot in IT. So I want to go with automation IT. Yeah, sure. So may I know your background? So you said like MCS, right? Or No, MTech? no, MTech MTech. from computer science. Okay, computer science. Perfect. Yeah, that should be okay. So don't worry about those 7 years. So because the thing is, in the past we have seen the candidates like you, those actually moved into the IT industry, and that will happen with you as well. Okay. Yeah. Thanks, Basundara. Next one is Surbhi. Surbhi, can you hear us? I think we are unable to connect with Surbhi. Meanwhile, we will connect to Redmi Note 9. Okay, so I don't see name, but Redmi Note 9. Could you please go ahead? No, yeah, you are not audible. You are still on mute. No, I think there's might be some audio connection issues. Surbhi, can you hear me now? Yeah, I think she has messaged that she is not able to. She's having some audio issues. Okay, so did she ping or the chat? Okay, may then who is next? Archana. Archana, you can go ahead. Hi, good morning, sir. I am Archana, and I am currently working as a test lead in for automotive domain actually. And so I have also worked with the tool test complete automation. But now I want to upgrade my skills, to Selenium and DevOps and all.
what sir you are going to take further. Okay, sure, Anjana. Thanks. Saurabh? Am I audible? Yeah, Saurabh, you can go ahead. Yeah. Good morning, everyone. This is Saurabh, and I'm a graduate student from computer engineering. Last September, I'm a fresher, and I'm new in software testing field, and I want to start my career in automation and Selenium. That's why I joined the course. Yeah, Saurabh. Yeah, welcome to the Radical and welcome Thank you, to the sir. course. Yeah. Surbi, can you hear me now? Surbi, you have done unmute, but your mic seems to be still not working. Meanwhile, Supriya, can you hear us now? Supriya also seems to be having some issue with the mic. So Supriya, Surbi, and one more candidate. I think they are unable to connect with you. So maybe Supriya, Surbi, if you can put your like details over the chat channel, but I want at least you are able to hear me or not. Could you please mention that into the chat channel if you are able to at least hear me? Okay, so I see. Okay, hello, good morning to all. Surbi, okay. You can hear us, right? Yes, okay. Surbi can hear us. What about Supriya? Supriya, can you hear us? Mm, Hi, good morning. Now I am able to hear you. Okay. Okay, but please make sure that maybe once we have a break, make sure you try to fix your audio. The reason is if you want to speak, okay, then this will remain a barrier for us. Okay. Okay, so guys, thank you for the quick introduction. Thank you for joining the course. Thank you for joining the Radical. Okay, so you already have the background. Any one of you who have not attended my demo or recording as well, like anyone from you who is not attended demo or recording, I believe everybody has at least attended demo or have gone through the recording, right? Okay, so I believe no one. Okay, let me read for Surbi's detail. My name is Surbi. I am working with Wipro as a senior associate executive since last 2.5 year. I want to learn automation course to improve my career. Absolutely fine. Okay, so I see it's a mix of the batch, and this is what the trend that I have seen in my last or previous batches. Similar trend I have seen, like around 10 to 20% of candidate having a 10 plus years of experience working into the different stream or technology, then around 10-20% freshers, then around 20-30% manual tester having 2 to 5 years of experience, and like 10-15% of guys out of the domain, like we have a couple of guys, those are like having a gap or they are from the different domain. So that's the trend I had seen, and the same trend I'm seeing with this batch as well. Okay, now let's see how I can share, because I need to manage my laptop and my monitor as well. Okay, let me first share my screen. So today what we are going to do, okay, so we will try to understand the overall all the course content. You need to prepare your mind, like what the different things that you can expect during this course. Okay, then we will do some installation, basic installation, which include Eclipse and Java.
Okay, if you have those installation, that's fine. And guys, for 2 week, okay, next 2 week, I would say, means 2.5 week, the speed of the course will be little slow. You know why? You might feel that, like, if you know the Java, little bit about Java and Eclipse or installation part, that's fine. But not everybody know that Eclipse installation or Java, very basic things. Okay, so have patience. Do not think that this is a very simple, and these guys are not aware about simple installation in Java. Okay, because I am going to make sure that everybody would be on the same page. There would be a situation after 2 months, even if you are knowing automation, even if you are knowing Java, even if you are knowing Selenium, you won't be able to understand few concepts because of the complexity of the concept or the advanced nature of those concepts. Okay, so have patience, those things will come. But at this moment, there would be some guys, those are very, very, very new to the this tools and technology. And that's why, and that even I will come to know the speed of the batch in couple of weeks, like who is very new, where I need to focus. Okay, one thing which I have observed over the period of time is like some simple concept. Okay, some simple logical concept, or when we say it's a common sense. Okay, but it can be a common sense to you or some of the guys that they understand this concept and they know, like, why Anil explaining this concept. It's a very, it's common sense, everybody know, should know. But to be honest, that's not the case. Okay, that's not the case. Whatever the concept that you see, like why Anil is spending 15 minutes to like explain that concept, it's a common logic. But there are candidates sitting in the same call, they are actually not aware, and the say similar, you will be in the similar situation later in the course where it's a common sense, but you might not understand that. Okay, so always let me explain for the guys who don't understand. Once I get the confirmation from everybody, then I will move to the next topic. And if you have doubt, obviously I am available. You can ping here in the chat channel. You can like unmute and you can speak. Even during the weekdays time, if you if you observe any issue. Okay, so let me share my screen. I have shared my screen. Okay, I don't know how to okay, so this will go automatically. During the week time, if you observe any issue, if you want to share something in terms of doubt, you need to log in. Okay, so let me show you this. Okay, so all the guys who have done the registration, they have the access to the Radical Technology website. This is the website. Okay, I'm just minimizing the display. Okay, how to disable this? Okay, let me. Okay, fine. So this is the Radical Technology website. Okay, if you go to the course, you will also have the access to this content if you have done registration. For a couple of guys, those have like Pradyum Prasad, since you are planning to do the registration along with Supriya in the afternoon. So once you do the registration, you will have the access to this website as well. What this website is all about, this website is going to maintain all the content, progress, and all the development going to happen during the course. Okay, so even even I am also new to this, but it's not very difficult thing that we can see. So this is the dashboard where we can see like how many courses you are part of it. I will ask Swapnil to update the course. I see only few contents are missing. Whatever we have discussed during the demo, those contents would be part of this course. So this course content would be updated. I will ask Swapnil to update those course content. Let's see the calendar. So you don't have to wait for any messages.
You just log into this website and see this is today's session. Next week, you can directly click over here and you can launch the Zoom session. Okay. So this is another way by which you will be integrated with the Radical Technologies. You will have recommended course. Let me go to the course, view course. Okay, so here you can see announcement. For example, if I am making any announcement like are you guys available on maybe Thursday morning at 8:30 to 9:30 for 1 hour just to discuss some new thing, okay, or any assignment. So we'll have this announcement section where we can put something, or I will put that announcement as a topic. The similar way we have chat room as well. Okay, we can ping. You can ping your doubt details. Okay, then this is specific to the doubts as well, where you can put any topic where I will try to answer whenever I get time. Okay, so this is another good portal to maintain all the progress of our course. Then this is syllabus. As I told, like this will be updated by Swapnil soon. Then so these are the participants. Then I'm not sure about this grade. Okay, later import skills setups. Okay, so this I'm not aware. Course total. Okay, so we'll go through the details, but I need to check one more thing, like where I can upload the training content and data. So we'll check that. This is newly launched portal by Radical, and we will make sure that we'll use it at max. Fine. So if you have not done registration, you don't have this link. And if you want to see like who all are part of this course, then you just need to click on this participant. So currently I see so see I think everybody has at least joined over here. Saurabh, Priya, Radhika, Mahesh, Shruti, Rajat, Vikrant and Archana, everybody has logged in. Okay, so for Prasad, Pradyumna and Supriya, you will get the access in the afternoon once you do the registration. Fine, all good, guys. Let's make it interactive. Whenever you have doubt, keep sharing those doubt, or just give a nod saying you at least you are with me. Yes. Yeah. Okay, so that's one thing, base thing. Now course content. So if you remember, during the training, I tried to give you an overview about the syllabus. So radical automation content. Okay, so this was the syllabus, and which I tried to explain, like what are the different things, who can attain, what you can expect. Okay, so even other than this, I will try to cover few things which are not part of the syllabus. I'm not going to commit it. If you guys make sure that we are on track in terms of all the course content and syllabus, you need to complete all the assignments. If we get we are getting the things done in terms of content, I will try to share few more advanced things as well, or informative topics as well, like how the things happens, how interviews are conducted, or what you can expect in the interviews in terms of Cucumber, Java, API automation. We'll try to explain those things, how things happens on the background, okay, which you might not be aware since you don't have that exposure. Okay, so that's one thing. Okay, let's go through the syllabus as well again. So manual testing. So this is, though this is not committed, but this is part of your syllabus, considering the basic thing of manual testing. This course is for automation, but still we are going to cover the little bit about the manual testing. If you already
I see a couple of guys are already having a good exposure to the manual testing. If they want, they can skip this session as well. Okay, I'm not going to start today this manual testing. We are just going to do the setup and basic things. But for manual testing, I will keep this optional. If you want, you can attend this session. If you don't want, uh, that's absolutely fine if you are not attending, because you might be knowing all these basic concepts. Why these basic concepts are required? You should be in position to understand the meaning of those words, like this regression testing, installation testing, what is security testing, or functional testing, unit testing, or integration testing. You should be able to understand those words. That's the only goal of this slide. Obviously, our main content will start from core Java. So in core Java also, we'll try to cover all the basic things first, and then we'll move to the advanced part. And again, so Java is such a huge that even if you learn Java for 6 months, Java is not going to be finished. Okay, so the content of Java is designed in a such a way that whatever the content, those are required for even for the advanced automation framework. Okay, those are already covered ideally, or all basic Java or core Java is already part of that. Other than that, whatever the things those are required for the framework, those are part of the course content. Make sure you understand this content very thoroughly. You know why? Because this is the only thing which will remain the prerequisite for the entire course. Entire course, whatever I am going to teach, I am going to even give you an example. Like, for example, on a given day, suppose I am teaching you the access specifier. Okay, I will give you the example how this access specifier, simple one-liner code, is being used into the automation. I will give you an example on the day when I am going to teach Java, and I am going to give you the same example when I am going to teach you Selenium as well, or the any automation code, that how this access specifier would be useful during the writing of automation code. Okay, the same will be applicable for like constructor or encapsulation or inheritance, or maybe the exception handling, how we can use this exception handling concept in automation. I will try to correlate, because you know Java, but you don't know how to use the Java for automation. So I will try to make the relation between automation concept and Java, so that you can understand how you will end up writing a good automation script. Obviously, there are two things which are required for initially: Selenium and Java. Then we'll add up the TestNG. Then we'll add up the advanced framework concept. Okay, so things will keep adding. Things will keep adding. Each individual part, like TestNG or Cucumber or even API automation or Selenium, Java, Eclipse, TestNG, Jenkins, Git, Maven. See, almost 10 tools I already talked, and we are going to learn those 10 tools. All these tools individually, if you want to learn, are very simple. Very simple. Why? Because they have certain feature predefined which we are going to learn. Okay. But when we want to write the scenario of to automate any use case, you may end up using multiple feature from the multiple tool. For example, you might need OOPS concept of Java as well as the variable concept of Java and exception handling of Java to automate one script. At the same time, you need Selenium's multiple concept to handle the UI. At the same time, you need TestNG as well, so that your test case is not dependent on any other test case, or if it's a dependent, how the dependency is being handled. Try to understand a lot of things I'm talking, but you need to start understanding like what's this all ecosystem. So we need to understand the entire ecosystem. Even for one tool, one feature, you are unable to understand. Even I tried to explain you, but you still have doubt. Obviously I'm there, but this doesn't mean that you should lose the hope to learn the other thing. Okay, that maybe
few concept of TestNG or few concept of even Cucumber. I know those things, but I have not ever used in last 17 years. Why? Because that was not required for me. Though I am knowing those concepts, though I am going to teach you. Okay. So the similar case, if you are not confident on any concept, have patience. Don't lose hopes. Don't get demoralized. That अभी मुझसे कुछ नहीं होगा यार, ये बहुत डिफिकल्ट लग रहा है. Don't think in that way. Okay. Because ये बहुत बड़ी चीज है. You might see that even interviewer is not going to ask that question, but my goal is to make sure that you are aware about all the concept. Okay. So this is what the, like, don't lose hope. That why I'm saying this, because people generally gets afraid, like ये आएगा क्या मुझे, यार ये हो पाएगा क्या मुझसे. सबसे सब कुछ हो पाएगा. Okay. I told you the dumbest guy sitting in this whole group is it's me. Electronics background, no coding exposure, A+B program not possible to write after my graduation. So if I can do these things, why not you? Because you guys, I feel like more technical than me. You are next generation guys, and whatever the guys, those are already having experience. They are all having at least little bit on the technology experience. Okay, so you are going to do that, because the contents, even like I will share you all the interview questions as well, like when we are done with this course. And like we will try to see the some mock interviews as well, which will give you the exposure, like okay, what we can expect from the interviewers point of view, how we can answer those things. Okay, so that's all the things we are going to see. Selenium content. So these are the Selenium contents. So guys, 20 slides of Java, 20 not, around 27 slides of Java. Okay, 21 slides of Selenium. Then manual testing around 6-7 slides, 10 slides. Okay, then how much like oral syllabus that we are going to learn. You should know those things. Where is my Cucumber and rest assured, another 21 slide. You can see even Jenkins is part of this part too. We are going to learn around 70-80 slides, more than that. Okay, so each day we will be visiting slide. What will be our approach? We will be visiting slide, any topic. For example, Gherkin introduction. We'll try to understand this. We'll try to understand the theory in maybe 10, 15, 30 minutes, whatever the time it takes. And then I will move to the coding part first. I will make sure that whatever I am talking, those will be implemented onto the code, or that will reflect into the code. And then you are going to implement that. And then there will be an assignment. That's what the overall like way we are going to learn the things. Also, do not hesitate to ask the question. Okay, language is not a barrier. You can ask me in Hindi, English, Marathi. Okay, don't hesitate, because कंपनी में तो आधा काम, आधा नहीं, मैं बोल रहा हूँ 80% इंडियन कंपनीज में काम है ना हिंदी में चलता है. महाराष्ट्र में 30-40% काम मराठी में भी चलता है. That's absolutely fine. We are going to talk important language, and that's a technical language. Guys, language is never a barrier. Do not afraid. आपको क्वेश्चन पूछो. Language is all about technical language, because if you want to be a technology guy, we will be talking into the technology language. Hence, my point is, language will not remain your barrier. Okay, बहुत बार ऐसा होता है कि यार हम वो सेंटेंस बनाने में ही रह जाते हैं. ओके, और तब तक वो टॉपिक भी खत्म हो जाता है. ओके, डोंट वेट फॉर दैट. अरे क्या पूछना है, लाइक कैसे पूछूं, ये सवाल प्लीज बाजू में रख देना एक कोर्स में. यू कैन टॉक टू मी इन एनी लैंग्वेज. एंड इवन इन द इंटरव्यूअर हमेशा, आजकल तो शॉर्टेज है लोगों का. आजकल लोग ज्यादा बोलते हैं, काम कम करते हैं. ओके, एंड दैट्स द फैक्ट. ओके, इंटरव्यू में भी बहुत बोलते हैं नॉन स्टॉप. इंटरव्यूअर को भी बोलने को मौका नहीं मिलता कभी कभी. बट विल मेक श्योर दैट we will talk in a
technical language to the interviewer as well, which he understand, which is required for that particular job or position or role. Okay, so that's what our goal is. Obviously goal तो सबका शायद पैसा होगा, बट यू नो रिस्पेक्ट, पैसा आता है ना तो ग्रोथ भी आता है और रिस्पेक्ट भी आता है. इफ वी गेट दोज थिंग्स इन एनी कंपनी, तभी जाके अपन बोलते हैं वर्क लाइफ बैलेंस है, सेटिस्फाइड हो. ओके, आपके पास पैसा है, ग्रोथ है, बट आपको कंपनी में रिस्पेक्ट नहीं ना. ओके, दैट हर्ट्स. ओके, एंड रिस्पेक्ट कब मिलता है? विथ योर नॉलेज, विथ योर एटीट्यूड. Okay, so we'll try to see like how we can increase our knowledge. Obviously attitude तो मैं आपका change नहीं कर पाऊंगा, but those things matter in the company, and we'll work on that as well, like how we can increase our knowledge. And you have already taken first step. It's my duty to make sure that your decision is right. Okay guys, I see chat channel पे मुझे 3 चीजें दिख रही है. Okay, okay, so nothing important. ठीक है guys, all are good? Yes. Are you understanding what I'm saying? समझ रहा है ना सब? अपना गोल क्या है? अपना गोल है सैलरी बढ़ाना, रिस्पेक्ट और ग्रोथ. ओके, जिनको जॉब नहीं है उनका पहला गोल रहेगा जॉब लेना. ओके, जिनको ऑलरेडी जॉब चल रहा है बट दे आर नॉट इनटू द टेस्टिंग फील्ड, दे नीड टू मूव टू द टेस्टिंग. जो ऑलरेडी टेस्टिंग में है, मैनुअल टेस्टिंग पे है या अदर टूल्स टेक्नोलॉजी पे, उनका गोल है कि ऑटोमेशन में गुड पे स्केल पे जॉब आना चाहिए. ऑब्वियसली मैनुअल टेस्टिंग वाले का पहला जॉब चाहिए, पहला गोल चाहिए कि वो ऑटोमेशन में मूव हो, irrespective of salary, with the same salary as well, that's fine. It just take a year, okay, to double your salary, because these are all junior guys and it won't take much time to double your salary. Okay, so ये गोल रखेंगे तो आफ्टर 6 months, 3 months का कोर्स है, अपने को 3.5 months भी लग सकते हैं if we take some holidays in between. Okay, or mostly if I am sick, then maybe we get the holiday. 3 महीने का कोर्स और नेक्स्ट 3 महीना practice, interview preparation, okay, and 2 hours or 1 hour's daily study. And even after 6 months you are not getting job, then something going wrong. मिलना ही चाहिए. क्यों? क्योंकि that is sufficient. We do not have resources in the market having that knowledge. So मिलना ही चाहिए. तो नहीं मिल रहा तो कुछ तो प्रॉब्लम है. इधर आपने स्टडी नहीं कर रहे हैं या प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं या इंटरव्यू में कहीं तो गलत हो रहा है. ओके, या फिर मैं रॉन्ग हूं कि मैंने गलत चीजें पढ़ाई है. ओके, सो दैट्स व्हाट द गोल. तो मैं कुछ चीजें दिखाता हूं कि अपन क्या करेंगे अभी. ओके, सो लेट मी शेयर. ओके, सो ये है अपना कंट्रोल Z. ओके, ये है अपना सेलेनियम. एक मिनट, हाँ, मैं एक आइडिया देता कि अपना कोर्स कैसे कंडक्ट होगा. ओके, इसको जावा रखते हैं. ये जावा है. ओके, ये यहाँ अपन है ना, ये जावा, ये आज का दिन है, ये डे 1 फॉर एग्जांपल, ये आज का अपना दिन है, आज डे 1 पे अपन. ओके, देन वंस वी आर डन विथ around 50-60% Java, okay, we'll immediately start the Selenium. Why? Because you will get enough time to understand and digest the Selenium. Okay, and both the concept will maybe in 4 hours, 2 hours Java. After doing certain features of Java, those are required just to start with Selenium. We'll do that, and after that we'll be parallelly doing Java plus Selenium. Okay, so why this is required? Okay, this is Selenium, your, sorry, this will be your Selenium. Okay, why this is required? If we do like this, okay, अगर मैंने जल्दी हो जाएगा. ओके, अगर मैंने ओवरलैप नहीं किया तो जल्दी हो जाएगा. ऑब्वियसली एंड टाइम तो उतना ही लगने वाला है, ये इतना ही टाइम लगेगा, यहाँ तक ही टाइम लगेगा सेलेनियम प्लस जावा को. बट यहाँ मैं ओवरलैप क्यों करने का बोल रहा हूँ? ओके, अगर अपन ने ये अप्रोच फॉलो किया तो क्या होता है, हम जावा का पहला फीचर आज सीखते हैं और जावा का लास्ट फीचर में भी आफ्टर 1 month, 1 महीना लग जाएगा जावा सीखते सीखते. ओके, जावा का आज पहला फीचर सीखा,
concept, and you are learning the last concept of Java on this day. When we start the Selenium, actually you really forgot this first concept, which I am using here as a part of Selenium automation. What I want you to be engaged with Java and Selenium at a time, because they go hand in hand. Okay, that's why once you are pretty much comfortable with the very basic things with Java, which are required to write basic script, basic automation script. Okay, we'll immediately pick the Selenium. Obviously, matlab, 2 घंटा ये 2 घंटा Selenium on a given day. Okay, and that is going to happen maybe after 3 weeks. Okay, from today, I am not considering today as a start of our course, but after 3 weeks we will be putting some time on the Selenium as well, so that you will get, see, if you start learning Selenium over here, you will get this much time to digest Selenium. Okay, but if you do this way, you will get this much time, extra time. This is the extra time, right? This much is the extra time you are getting to digest Selenium, and that's why like you feel engaged, connected with Java as well as Selenium. Fine. Once you are done with Java, rest of the course will flow as it is. Like it will go with the Cucumber and Cucumber and Rest Assured, and then it will go with the Jenkins Git Maven, where we will be doing Jenkins installation. Git will create the Git account. We'll configure the report. We'll understand the Maven. We'll configure everything, whatever we have developed, into the Jenkins. Okay, so how many of you have not heard about the Jenkins word? Not heard. गलत को उल्टा क्वेश्चन को पूछना चाहिए क्या? Not heard सब बोलेंगे यार, आंसर ही नहीं करेगा नहीं तो कोई. Not heard, never heard about Jenkins word. Anyone here? सबको Jenkins पता है. Word सुना है? Me, Supriya, never heard. Surbhi, no. Okay, so Supriya, Surbhi, and Shruti saying they have never heard about Jenkins. Absolutely fine. Fine. Now tell me how many of you have not heard Cucumber word? Cucumber. I'm just checking like where you guys stand. Fine. Okay. Basundara saying Cucumber never heard. Okay, Supriya, Surbhi. Okay. How many of you have never heard about the Git? I am considering you 3 that you have not heard about Git. No? Okay. Okay, fine. Shruti, Vasundhara. That's fine. That's fine. I'm expecting everybody should say we have never heard, but this is good that at least few guys have at least heard. How about the Maven? Maven. You have never heard this Maven? No. Okay. So see. Okay. 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 Fair enough. Fair enough. So these are the tools, technology, which will be used at the end of the course. Okay. How many of you have heard Rest Assured? Rest Assured. Or not heard? Never heard Rest Assured? No. Okay. 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 Rest of the guys, I believe they are aware about the Rest Assured. Okay, fine, fine. Okay, so so obviously everybody is going to learn those things. Even you guys don't worry. Even if other guys have heard those words, but they might not have worked on that. Okay, that's absolutely fine, and do not get as I said, like demoralized that अरे यार मैंने नहीं सुना, सबने सुना है, ऐसा कुछ है नहीं और होता भी नहीं है. Okay, everybody is different, having a different background, having a different number of years of experience. Okay, and we are not competing with each other. We are competing with 80 lakh software engineers in India. Okay, तो अपनी competition किसी से नहीं, will work as a group. Okay, and will how to become a full stack SDT. Okay, you know, full stack
full stack meaning is front end automation and back end automation, and that's what this course is. Front end automation using Selenium, back end automation using REST assured. That is called as full stack SDT, software developer engineer at test. Okay, and that's what the content in. You and I would say we are advanced full stack engineer. Why? Because we are learning the process automation as well with the Jenkins, Git, and Maven. We are going to literally set up the Jenkins by downloading the Jenkins. This is being done by the DevOps team. We are going to do that. Even our automation will run automatically on your machine or any machine. Okay, that's what the advanced level of automation we are going to do. But that time will come maybe after 2.5 months. Okay, so that's what the SDT. And obviously you need. So what is full stack developer? Full stack developer who understand the UI technology as well as the backend technology. You know the Spring Boot as well as EXTJS as well, and you know the board development. That is called as full stack developer. Similarly, full stack test engineer. Front end testing and back end testing. Obviously automation, not the manual testing. Clear, Rajat? And thanks for the question. Okay. Okay, so guys, are you clear with this? Okay, कौन सा ये slide था? हाँ, are you clear with this approach? Day 1 और ये अपना रहेगा, ये रहेगा अपना last day. Okay, so क्यों बता रहा हूँ मैं? क्योंकि आपको पता चाहिए कि मुझे कोई भी क्लास मिस नहीं करना है. Last day अपना, ये नहीं sorry, ये last day, ये यहाँ रहेगा last day. जो भी रहेगा, आई एम नॉट सेइंग कि 3 महीना है और मैं 3 महीने में फिनिश करूंगा. 1 वीक एक्स्ट्रा भी लग सकता है, 2 वीक भी एक्स्ट्रा लग सकता है. आई विल मेक श्योर दैट यू आर कंफर्टेबल विद द स्पीड. ओनली थिंग इज यू नीड टू मेक श्योर दैट you can't say Anil I have to leave by 11. आप निकल सकते हो, then you can hear the details or cover those content later on, but we'll always have minimum 3 hour session, maximum 4. Okay, so या ऐसा कुछ अपना कंटेंट रहेगा. आपको लग रहा होगा कि यार क्या टाइम पास चल रहा है, जल्दी से कंटेंट चालू करो, बट थोड़ा क्या बोलते हैं, ब्रेन को डाइजेस्ट करने दो, जो लोगों के लिए बहुत चीजें नहीं है. ओके, सो यहाँ रहेगा अपना कुकुम्बर और रेस्ट एश्योर्ड, और यहाँ रहेगा डेवऑप्स फॉर DevOps, और मैं इसमें लिखता जेनकिंस, गिट, मैवन. ठीक है, तो ऐसा कुछ कोर्स अपना ड्राइव होने वाला है. ओके ओके, सो नाउ दिस इज वेयर वी आर गोइंग टू स्टार्ट with our content. So it's almost hour. Okay, so let's ask few more questions. How many of you have not written Java code since last 2 years? 1 or 2 years. Never written Java code in last 2 years. Chat channel is open. You have never written code. Never written. For Rajat, very good answer. I am very happy with this answer. Don't know Java. Perfect. Okay. Never written. Should be never written. So okay, fine. No, never written in 1 year. Saurabh. Okay, fine. Not since 10 years. Okay. Never written. Okay, so guys, see, we all are on the same page. You are all our 10th fail student for me. Okay, you all so even if you have experience, fresher, everybody is on the same page on the day 1 in first 1 hour. So that's why, like I am saying, do not hesitate. If you are less number of years of experience, somebody is having like more experience, they are asking more mature question. No, all the questions are valid questions. Ask me. If I don't know, I will say I don't know. जो मैंने शायद ऐसे क्वेश्चन है कि जो फर्स्ट टाइम आते हैं जिंदगी में, मुझे भी नहीं पता होता है, मैंने भी कभी वो एक्सपेरिमेंट नहीं किया होता है. I will say, okay, let's find out that answer
टुगेदर, अपन साथ में काम करेंगे. इट्स अ वेरी वेरी ह्यूज वर्ल्ड ऑफ टेक्नोलॉजी एंड फीचर्स. बहुत बड़ी दुनिया है, बहुत ही बड़ी. मैं बोलता हूँ मुझे सिर्फ 25-30% पता है ये जो कर रहा हूँ उसका भी. एंड मैं उसमें से शायद 15-20% आपको सिखाने वाला हूँ. उसमें से आप कितना समझने वाले हैं आपको ही पता. बट बिलीव मी, आपने 50% भी कोर्स लेके गए ना मार्केट में, यू विल हैव द टेकर्स. आपको कोई तो लेने वाला रहेगा, क्योंकि वो नॉलेज नहीं है मार्केट में. देखा आप खुद देख लो, यहाँ इतने एक्सपीरियंस लोग हैं, उसमें से किसी ने जावा कोड काफी टाइम से नहीं लिखा. दिस मीन्स मार्केट में ऐसे बहुत रिसोर्सेस है कि जिन्होंने जावा के साथ टच नहीं. आपने कोई जावा सीखने के बाद ही आपने उनको उनको लाइक ओवरटेक कर देंगे. ओके, तो मतलब आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर के जितने लोग हैं उसमें से आधे लोगों को ओवरटेक कब करेंगे? जावा सीखने के बाद ही. सेलेनियम सीखने के बाद और 50% लोगों को ओवरटेक कर देंगे. कुकुम्बर और रेस्ट एश्योर्ड सीखने के बाद यू विल बी इन दैट क्रीम लेयर कि जिनको जॉब मिलना है, सिर्फ उनको ट्राई करना है. ओके, सो हैव पेशेंस, बी विथ मी फॉर नेक्स्ट 3 months. फ्राइडे नाइट की पार्टी और सैटरडे नाइट की पार्टी थोड़ा अवॉइड करो. ओके, लेट पार्टी, एंड आई विल मेक श्योर दैट you will have a job. Okay, ठीक है. Core Java, all good guys. I need your final confirmation to start with the content with Java. आज अपन. Okay, thank you Saurabh. Okay, thank you guys, thank you very much. आप सब कोई बेड पे देख के कोर्स कंटेंट अटेंड कर रहा होगा, उसके लिए भी ऑल द बेस्ट. एंड आपको सबको ऑल द बेस्ट. Let's work together, make it happen. Let's change something in next 6 months, and let's start with the Java. So guys, Java, सबने नाम सुना है Java. Java is a language. Hindi is a language, Marathi is a language, and Java is a language. Okay, so Java में क्या है? Java is having all the concept and feature similarly the way we have in any language, irrespective of it's a coding language या जो बोलने वाली लैंग्वेज है. ओके, सब में कुछ तो कंसेप्ट होता है. एंड क्या होता है? कीवर्ड्स होते हैं. व्हेन वी हैव few keywords, okay, like I am a automation engineer. Okay, I am automation engineer. These are the words, and English, when we combine these words, we form a sentence, and that sentence is having some meaning. I am Anil. I use the same I am word again, but this sentence is having a different meaning. Similarly, in Java, we have keyword, and we are going to use those keyword. Prior to that, very good sentence over the screen. Not all manual testers will disappear. Only the professional ones will stay. Okay, will stay. इसका मीनिंग बताता मैं. ये मेरा एक्सपीरियंस है. ये मैंने एक्सपीरियंस से देखा है कि क्या होता है. आज आपके दोस्त जो सारे मैनुअल टेस्टर है या आपकी टीम है, ओके, कंसिडर यू हैव 5 years ऑफ एक्सपीरियंस एंड आपकी टीम है या फ्रेशर है, मैनुअल टेस्टिंग में आ गए आप. आफ्टर 5-10 years मैनुअल टेस्टर, उसमें से जिनके पास कम्युनिकेशन स्किल एक्सेप्शनली गुड है, ओके, या उनके मैनेजमेंट के साथ बहुत अच्छे रिलेशन है, ओके, लीडरशिप क्वालिटीज है, इसमें से कुछ तो चीजें हैं उनके पास, ओके, अलॉन्ग विथ काम भी कर रहे हैं, अलॉन्ग विथ मैनुअल टेस्टिंग काम भी कर रहे हैं, या और एक चीज है डोमेन नॉलेज है. उनका डोमेन नॉलेज बहुत अच्छा है, लाइक बैंकिंग सिस्टम और PLM डोमेन और टेलीकॉम डोमेन. ओके, उनका डोमेन नॉलेज अच्छा है. 10 साल के बाद they may have handsome salary still, but not everybody. Okay, but not everybody. Even ऐसा होता है कि जो सबसे पहले फायर किए जाने वाले लोग होते हैं ना, वो मैनुअल टेस्टर्स होते हैं. क्यों? क्योंकि उनका रिप्लेसमेंट कम पैसों में मार्केट में अवेलेबल है. ओके, दैट्स द फैक्ट. क्योंकि 10-15 साल वाला बंदा रोज आके टेस्ट केस लिख रहा है, एग्जीक्यूट कर रहा है, उसको डोमेन नॉलेज भी एवरेज है, तो मैं 2 साल वाला बंदा क्यों ना लूं? Okay, so that's why like they need to grow in some other area, and I told you like they need to have the good relationship with the management. उनका डोमेन नॉलेज अच्छा चाहिए, बहुत अच्छा कम्युनिकेशन और लीडरशिप स्किल्स चाहिए. ओके, ये नहीं है ना, आप नॉर्मल इंसान हो एवरेज वाले, तो आपका जॉब
अगर रहा तो आपका सैलरी मार्केट में मतलब कॉम्पिटिटर नहीं रहता. दैट्स द फैक्ट. ओके, एंड यू मे नॉट बी एबल टू कम्पीट द अदर टेक्नोलॉजी, क्योंकि उनका सैलरी बढ़ जाता है. दैट्स द फैक्ट. सो द स्टेटमेंट सेज कि मैनुअल टेस्टर रहेंगे, और बट सारे नहीं रहेंगे लॉन्ग टर्म के लिए. ओके, professional engineers, professional automation engineers will stay for a long time, and that's my experience. My entire team is automation engineer. I will tell my story about my team as well in my current company, like what are they doing, how many years of experience they have, and how much salary they are drawing. Okay, ये गुड एग्जाम्पल एज वेल कि मेरी टीम लास्ट 5 साल से मैं जिसके साथ काम कर रहा हूँ ना, उनका सैलरी, उनका टेक्नोलॉजी क्या काम कर रहे हैं, उनका एक्सपीरियंस कितना है, ये मैं किसी दिन आराम से बताऊंगा, या मैं भूल गया तो मुझे बताना. वो उन्होंने ग्रो क्यों किया वो भी पता चाहिए अपने को, अपन को उसी पाथ पे जाना है. ओके, सो दैट्स व्हाई वी नीड टू हैव द टेक्नोलॉजी टच. मैं आज भी मैनुअल की टेस्ट केस लिखता हूँ, आज भी लिखता हूँ आफ्टर 17 ईयर, बट it's my job as a part of automation engineer. I need to write the test case which needs to be automated. Okay, मुझे वो किसी का असिस्टेंस लूंगा तो मुझे फंक्शनलिटी कैसे पता चली. तो मैं आज भी लिखता हूँ, मेरा 5 to 10% टाइम आई स्टिल इन्वेस्ट ऑन मैनुअल टेस्टिंग. First, I write the test cases, I execute those manually, and then I go for the automation so that I can automate with the best possible way. So never say that I am automation engineer and I am not going to write any manual test. Then it's very difficult again for you to survive as an automation engineer as well, because that's a attitude barrier. नहीं, कोई भी काम छोटा नहीं होता. यहां से स्टार्ट करना, सबसे सब काम आना चाहिए, फ्रॉम बॉटम टू टॉप. सब काम खुद को आना चाहिए, so that you will make the dependency. Okay, so that's why these are the very important lines. Now अपन क्या क्या सीखेंगे. Eclipse. Okay, Eclipse is a tool. Eclipse is a tool where we are going to write the code. Even if you have not seen Eclipse, how many of you have already installed the Eclipse on your machine? बताओ जल्दी मुझे. How many of you have Eclipse installed on your laptop? Yes, Rajat is having Eclipse already installed year ago. ठीक है. देखते हैं अपन सौरभ, देखते हैं, जरूरत पड़ी तो कर लेंगे, नहीं कि नॉट इंस्टॉल. ठीक है, फाइन. बाकी लोग बट जरूरत पड़ी तो करेंगे, इवन जावा इंस्टॉल करेंगे. ओके, सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि Eclipse क्या है. ओके, मोस्टली यू डोंट हैव Eclipse, दैट्स फाइन. ओके, ऑब्वियसली जावा भी नहीं होगा, जावा का भी वर्जन नहीं होगा, अपन वही करना है, आज तो वही करना है. ओके, सो जावा सीखना है तो व्हाट इज दिस Eclipse? अनिल, to be honest, I don't understand what is this Eclipse. Eclipse is a tool. मैं बताता हूँ आपको, एक डायग्राम निकाल के बताता हूँ. आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए. सबसे इंपॉर्टेंट है आपके कंसेप्ट कि भाई टूल क्या काम करता है. बाकी तो सब कर लेते कोडिंग. देखो, ये होता है, ये होता है आपका डेस्कटॉप. ओके, ये डेस्कटॉप आपका विंडोज मशीन. ओके, डेस्कटॉप. इसमें एक होता है कि जब आप जावा इंस्टॉल करते हो, ओके, तो ये होता है आपका जावा. ओके, मैं थोड़ा और अच्छे से निकालता. ये है आपका जावा. ओके, या लिखता, ये है आपका जावा. इस मशीन पे ये डेस्कटॉप है. ओके, आप बोलोगे ये डेस्कटॉप, और लैपटॉप लिखता, लैपटॉप, ये आपकी जावा है. आपको जावा में कोड लिखना है तो कहाँ लिखेंगे? ब्राउजर में लिखेंगे, नोटपैड में लिखेंगे, ओके, या ये स्लाइड्स में लिखेंगे, या वर्ड में लिखेंगे. ओके अनिल, यस, आई कैन अंडरस्टैंड कि अपन कहीं तो कोड लिखना पड़ेगा. वो कहीं तो चीज क्या है? दैट इज कॉल्ड एज Eclipse. गेटिंग? तो यहां होता है ये आपका Eclipse. ये होता है Eclipse. ओके, Eclipse उसका नाम है. ऐसा कोई टूल है, इंटरनेट एक्सप्लोरर ये भी वेब टूल है. ओके, ब्राउजर टूल है. ओके, ये पेंट क्या है? पेंट भी एक टूल है वेयर आई कैन ड्रॉ समथिंग. वर्ड क्या है? एक टूल है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, नोटपैड, ये टूल है.
वैसे ही इक्लिप्स ये टूल है, और इसलिए आपको पता नहीं क्योंकि इसकी जरूरत नहीं पड़ती बाय डिफॉल्ट, मशीन पे इसकी जरूरत नहीं पड़ती अनटिल एंड अनलेस यू वांट टू डू समथिंग। ठीक है, तो ये इक्लिप्स टूल हमें क्यों सीखना पड़ेगा? क्योंकि ये टूल बात करता है जावा से। ये बोलता है मैं ना जावा से बात करूंगा, या ऐसे बात करता है। ओके, इक्लिप्स में अपन क्या करेंगे? इक्लिप्स में लिखेंगे अपन प्रोग्राम, ये प्रोग्राम है। ओके, ये आपका प्रोग्राम a प्लस बी का, ए माइनस बी का, ये मल्टीप्लीकेशन का, ये एडिशन का, ऐसे 3 प्रोग्राम लिखे इक्लिप्स में। ओके, इक्लिप्स बोलता है कि अरे भाई मुझे पता नहीं है कि ये इसको रन कैसे करना है, मुझे चाहिए पहले जावा। ये कोड किसका है? ये जावा का है क्या? ओके, तो मुझे बताओ कौन से जावा है। तो हम बोलेंगे भाई हमने हमारे मशीन पे एक जावा इंस्टॉल की है। इंस्टॉल किए मतलब जैसे वर्ड इंस्टॉल करते हैं, जैसे एक्सेल इंस्टॉल करते हैं, जैसे आप कोई वीडियो टूल इंस्टॉल करते हो, MS पेंट इंस्टॉल करते हैं, वैसे ही आपको इक्लिप्स और जावा दोनों इंस्टॉल करने पड़ेंगे। इंपॉर्टेंट पार्ट इज ये इक्लिप्स खुद जावा में लिखा गया है। तो सबसे पहले लैपटॉप पे, अगर आपके पास ब्लैंक लैपटॉप है, तो सबसे पहले जो चीज चाहिए, ओके, वो है नंबर 1 चीज, वो है आपका जावा। ये है नंबर 1 चीज। ओके, क्लियर? ओके, उसके बाद क्या चाहिए? उसके बाद चाहिए आपको चाहिए 2 नंबर की चीज, इक्लिप्स, जिसमें हम जावा का कोड लिख पाए। अनिल मेरे पास इक्लिप्स नहीं है, तो कोड लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। ओके, एक क्वेश्चन है, आप तो पूछने रहे, मैं पूछ लेता। अगर मेरे पास इक्लिप्स नहीं है तो मैं लिख सकता हूँ क्या कोड? लिख सकते हैं। ओके, एनीवे, उससे पहले और एक क्वेश्चन, इक्लिप्स जैसे और कौन से टूल है? जैसे जावा के जैसे और लैंग्वेज है, जैसे सी शार्प है, पाइथन है, ये लैंग्वेज है, राइट? वैसे इक्लिप्स जैसे कौन से टूल है? इंटेलिजे आइडिया है, नेटबीन्स है, ये टूल्स है, सिंपल टूल। बट तो फिर इक्लिप्स से अनिल क्यों कर रहे हैं? इंटेलिजे आइडिया पेड टूल है, और इसका जो फ्री वर्जन है उसमें काफी सारे फीचर्स है ना मिसिंग है, इसलिए मैं इंटेलिजे आइडिया नहीं यूज करूं। प्लस maximum company uses Eclipse. It's a free tool. Okay, all tools are free. Whatever the tools libraries that we are going to use throughout the course, all are free, available in the market. We can just download and use it. Okay, no need to pay anything. Okay, तो इसलिए Eclipse यूज कर रहे हैं क्योंकि this is a highly used tool in the world. ओके, तो इसमें अपन प्रोग्रामिंग लिखेंगे, बट इसका कोड खुद जावा में लिखा है, तो इसलिए अपन को सबसे पहले जावा डालना पड़ता है। जैसे आपको अगर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डालना है तो आपको क्या चाहिए? विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पहले इंस्टॉल चाहिए आपके लैपटॉप पे, विंडोज तो चाहिए, उसके बाद वर्ड डालेंगे ना माइक्रोसॉफ्ट का। वैसे ही अगर आपका जावा है तो उसके ऊपर इक्लिप्स इंस्टॉल करेंगे, उसमें इक्लिप्स में अपन कोड लिखेंगे। हाँ, तो मैंने पैरेलल टूल भी बताया इंटेलिजे आइडिया, नेटबीन्स, these are the parallel tool which are doing the same thing what Eclipse does. Now my next question is, if I don't have Eclipse, how I can write the code? You can write the code, okay, sorry, you can write the code into notepad में कोई कंपनी में कोई भी कोड नहीं लिखता, किसी भी कंपनी में कोई भी नोटपैड में कोड नहीं लिखता, बट आप लिख सकते हैं। दैट्स व्हाट माय पॉइंट इज, कि आप लिख सकते हैं। अनिल तो फिर सिंपल चीज, इस इक्लिप में ऐसा क्या है कि जो नोटपैड नहीं हो सकता? ओके, मैं सारी चीजें यहाँ प्री डिफाइंड है, मैं बिल्ड कर सकता हूँ, मैं 1000 फाइल मैनेज कर सकता हूँ, 1000 डिफरेंट प्रोजेक्ट मैनेज कर सकता हूँ, कौन से जावा में कौन सा प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट होना है वो मैनेज कर सकता हूँ, मुझे लॉग्स मिलते हैं, मुझे एरर दिखते हैं, रन करने से पहले मुझे पता चलता है कि मेरे लाइन नंबर 10 पे एरर है, वो पहले सॉल्व करनी पड़ेगी। That is not available in Eclipse. That's why we are going to use Eclipse, and I will show you that like Eclipse कैसे काम करते हैं। Clear? Any doubt so far? Guys, any doubt so far? Right side पे स्क्रीन है, अगर आपको यहाँ भी डाउट है मुझे पूछो। Any doubt so far? All good? Eclipse समझ रहे हैं वर्ड? अभी तो अपन इंस्टॉलेशन बाद में, डाउनलोड बाद में करेंगे, बट आर यू क्लियर टिल दिस पॉइंट? यस, ओके। तो क्या होगा पता है, अपने को इक्लिप्स भी सीखना पड़ेगा। इक्लिप्स, ओके। नाउ अनिल, अगेन आई हैव क्वेश्चन,
ये जावा भी सीखनी, इक्लिप्स भी सीखना, ऑटोमेशन भी सीखना, फ्रेमवर्क भी सीखना। ये इक्लिप्स तो कहीं आपने बताया नहीं था सीखना पड़ेगा। ओके, इट्स अ टूल। आपको क्या सीखना है पता है? ये होम में क्या ऑप्शन है, व्यू में क्या ऑप्शन है, टेक्स्ट में क्या ऑप्शन है, मुझे कहाँ से कलर मिलेगा, ये नोट पैड के पेंट के लिए सीखना पड़ेगा। वैसे ही इक्लिप्स में 4-5 ऑप्शन अपने को बेसिक जो रेगुलरली रखते हैं ना वो सीखने हैं। तो बाकी की चीजें ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप ऑटोमेटिक सीख जाओगे, क्योंकि उसमें बहुत सिंपल चीजें हैं। जस्ट कंपाइल, रन, write the code, create a new project, class, do the some configuration। जो बेसिक चीजें हैं, उसको सीखने को कितना टाइम लगेगा? आप 15 मिनट में लिखना कोड चालू कर दोगे, आधे घंटे में आप बोलोगे अरे ये इतना तो मुझे आ ही जाएगा। एंड एडवांस फीचर जो शायद अपने को लगेंगे भी नहीं, क्योंकि अपन डेवलपर नहीं, अपन ऑटोमेशन का कोड लिख रहे हैं, तो बहुत बेसिक चीजें लगेगी, वो सारी अपनी ऑटोमेटिक हो जाएगी। और पूरे 3 महीने इक्लिप्स यूज कर रहे हैं तो आप ऑटोमेटिकली सीखने वाले हो। ठीक है, ठीक है, यहां तक क्लियर अपन को क्या क्या करना है। उसके बाद वो सेलेनियम वगैरह वो पिक्चर में आएंगे इसके बाद। ओके, तो वो देखते हैं अपन, वो बाद में। ओके, तो अभी अपने को क्या इंस्टॉल करना पड़े? कोई बोलेगा मुझे इसमें सबसे पहले अपन को क्या इंस्टॉल करना चाहिए? इफ यू आर ऑब्जर्विंग माई डिटेल्स केयरफुली, व्हाट वी नीड टू इंस्टॉल? करेक्ट, परफेक्ट, जावा इंस्टॉल करना पड़ेगा। नाउ अबे जावा इंस्टॉल कहाँ से करना, और ये क्यों पता चाहिए मुझे? जावा इंस्टॉल अनिल दे दो यार कहीं से भी जावा, नो, क्योंकि आज एक जावा यूज कर रहे हैं। टू बी ऑनेस्ट, क्या क्या होने वाला है वो भी बताता। कंसिडर यू आर यूजिंग जावा 8 टुडे। 8, one of the most stable, widely used version in the world is Java 1.8, इसको 8 भी बोलते हैं। Consider you are using that, okay? And Selenium working fine, Cucumber working fine, Jenkins working fine. Now the thing is, after 6 months, you are running the code which we have written into the class, and that is not working. Why? First of all, your code written for Java Selenium and it was working on browser got updated। ये ब्राउजर जो देख रहा है ना, क्रोम या फायरफॉक्स, वो उसका लेटेस्ट वर्जन आपके मशीन पे आ गया। वो लेटेस्ट वर्जन के लिए सेलेनियम बोल रहा है कि मेरा भी लेटेस्ट वर्जन लेना चाहिए, जो मे बी 1 वीक पहले रिलीज हुआ है। आपने बोला यार सही बात है, लेटेस्ट ब्राउजर आया है तो मुझे सेलेनियम का भी लेटेस्ट वर्जन लेना चाहिए। आपने लिया लेटेस्ट वर्जन सेलेनियम का लिया, तो लेटेस्ट वर्जन के सेलेनियम के डॉक्यूमेंटेशन में लिखा है कि आप 1.8 पे रन नहीं कर सकते, अभी आपको जावा 11 लेना पड़ेगा। गेटिंग? चेनिंग रिएक्शन देखा कैसे हुआ? आप आइडियली ब्लॉक्ड हो चुके हैं ऑटोमेशन रन करने के लिए, बट इफ यू वांट टू रन ऑटोमेशन यू हैव टू अपग्रेड ऑल दिस। तो ये मुझे कैसे पता चलेगा कि अभी कहाँ करना है? इसीलिए मैं बता रहा हूं कि आप एज अ न्यूबी हाउ यू शुड स्टार्ट। ओके, तो मैं भी वही दिखा रहा हूं कि अगर फ्यूचर में मुझे करना ही पड़ने वाला है तो मैं आज क्यों ना देखूं। ओके, तो एटलीस्ट आपको पता चाहिए कि जावा 1.8 डाउनलोड करने वाले अपन, रीजन बताता, अपन उसको 11 पे अपग्रेड भी करेंगे आफ्टर 1 मंथ। वाई? एक एक्सपेरिमेंट करेंगे अपन, 8 से 11 को अपग्रेड करने का क्या एक्सपीरियंस होता है, कौन से प्रोग्राम चलने बंद हो गए, कौन से प्रोग्राम इनेबल्ड हो गए, वो भी देखेंगे। ओके, सो जावा 8 which is one of the stable version of Java 8 लिखता मैं, Java 8 डाउनलोड फॉर विंडोज। ओके, ऐसा लिखा मैंने कुछ। Oracle की वेबसाइट यूज योर ऑथोराइज्ड वेबसाइट। ओके, so maybe you can also try to search similar thing। मैं ओपन कर रहा हूं, यहाँ न्यू पेज में गया। ओके, सो यू कैन सी, अभी समझ लेते हैं गाइज, डू नॉट क्लिक एनीवेयर। पहली तो चीज आपको अकाउंट क्रिएट करना पड़ने वाला है ओरेकल में आपका ईमेल आईडी से। इफ यू डोंट वांट टू डू दैट, मैं वो भी बताता, बट थोड़ा इधर देखते हैं। ये देखो, ये लिनक्स वाली जावा है, लिनक्स का मशीन पे ये जावा डाउनलोड होता है। ओके, ये भी, ये 32 क्या है? ये है 32 बिट और ये है 64 बिट। ओके, अपन विंडोज की बात करते हैं। किसी का मशीन अदर देन विंडोज, मुझे ये भी बता दो
लिनक्स का भी देखना पड़ेगा फिर, अगर किसी का मशीन लिनक्स है तो। कहाँ है चैट विंडो यार? किसी का अदर देन विंडोज का मशीन है? आई डोंट सी एनी पिंग, सो आई अज्यूम एवरीबडी इज यूजिंग विंडोज मशीन। ठीक है, चलेगा, एवरीबडी इज यूजिंग विंडोज मशीन, सो माय मशीन इज आल्सो विंडोज। इट्स इजी, मतलब कोई एक चीज एक बंदा अलग यूज कर रहा है मैक या लिनक्स, तो थोड़ा डिफिकल्ट जाता है फिर एक्सप्लेन करना। ओके ठीक है, ये देखो विंडोज की बात करते हैं। विंडोज 86, ये पता है ना, x64 का मीनिंग क्या होता है? मतलब ये होता है 64 बिट। और i586, ऑल इलेक्ट्रॉनिक्स गाइस, डू यू रिमेम्बर यू लर्न दिस 586 प्रोसेसर? आपने पढ़ा होगा ये, इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स के लोगों ने तो पढ़ा होगा 586 प्रोसेसर। ओके, तो ये जो प्रोसेसर है ये 32 बिट है और ये 64 बिट है। अभी मुझे जावा डाउनलोड करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल, मेरी जावा कौन सी है, ये सॉरी मेरा विंडोज मशीन कौन सा है, कैसे पता चलेगा? ओके, सो व्हाट वी नीड टू डू, गो टू द सेटिंग्स। यहां मैं नीचे टाइप कर रहा हूं सेटिंग्स, क्योंकि अपने को जावा डाउनलोड करने से पहले अपना मशीन का कॉन्फ़िगरेशन पता चाहिए ना। गो टू द सिस्टम और यहाँ अबाउट में जाओगे ना, तो देखो मेरा मशीन का डिटेल्स मुझे दिख रहा है कि मेरी मशीन है 64 बिट। ओके, एंड दिस इज व्हाट द रैम एंड अदर डिटेल्स। और मेरा विंडोज कौन सा इंस्टॉल है, विंडोज 10 का दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा, हाँ विंडोज 10 यहाँ है। मुझे बताओ आपका सबका कॉन्फ़िगरेशन क्या है? किसी को नहीं समझ में आ रहा तो भी बताओ। ये देखो मैं फिर से रिपीट करता, रिपीट करूं? ओके गाइस, अनम्यूट कर दिया तो भी चलेगा। ओके, सेटिंग्स टाइप कर रहा हूं नीचे। आई होप एवरीबडी इज यूजिंग एटलीस्ट विंडोज 10 सेटिंग एंड एटलीस्ट 8 GB रैम। 4 GB रैम बहुत डिफिकल्ट जाने वाला है आपको। आप तुरंत जाके ना अपग्रेड कर लो, रैम डाल लो। 1000 रुपए की रैम आती, रैम 4 GB ऐड कर लो उसमें। ये देखो सेटिंग्स, मैंने यहाँ नीचे सेटिंग्स लिखा, सेटिंग्स पे गया, उसके बाद यहाँ क्या आया था, सिस्टम आया, सिस्टम आता है, सिस्टम में जाओ और नीचे सबसे अबाउट में जाओ। ओके, तो आपको यहाँ दिख जाएगा कि आपका मशीन 64 बिट है या 32 बिट है। और मुझे वो पिंग करो कि 64 बिट 32 बिट किसका है। ओके, 64 बिट, 64 बिट, परफेक्ट परफेक्ट। और किसका? आई एम जस्ट एक्सपेक्टिंग नो 32 बिट। गुड 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 गुड। 11 होगा प्रद्युम, चलेगा कोई बात नहीं। सिंगल लैंग्वेज 32 बिट किसी का है? अभी भी आई स्टिल हैव नॉट रिसीव्ड ऑल द रिस्पॉन्स। अगर 32 बिट है तो आप 1.8 के ऊपर जा नहीं सकते। जावा इज नॉट, ओके परफेक्ट, जावा इज नॉट सपोर्टिंग 32 बिट operating system after 1.8. You won't be able to download itself। जावा ने बनाया ही नहीं, जावा बोली सब लोग 64 बिट पे मूव हो जाओ, ठीक है। एंड आई एम वेरी हैप्पी एवरीबडी इज हैविंग 64 बिट मशीन। उसके नहीं तो फिर जेनकिंस में प्रॉब्लम आता, जेनकिंस सेलेनियम ग्रिड में, कि जो शायद 1.8 पे प्रॉपरली नहीं चलती। ओके क्लियर, गुड, ठीक है। अपने को अपना मशीन पता चल गया। अभी अपने को फिर से ओरेकल वेबसाइट पे जाना है। ओके, क्यों मैं स्टेप बाय स्टेप जा रहा हूँ? क्योंकि आज के बाद ये चीज फिर से पड़ने वाली है आपको। मे बी आफ्टर 2 मंथ 3 मंथ जब भी नया वर्जन आएगा तो आपको ये सारी चीजें पता चाहिए। तो आपको ये डाउनलोड करना है, तो आपको 64 बिट है तो ऑब्वियसली आप जेडी के ये डाउनलोड करोगे, ये डाउनलोड करोगे, बराबर। ये देखो, अगर आपको डाउनलोड करना है यहाँ से डाउनलोड कर लो। ओके, EXE है, डबल क्लिक करना होता है, इंस्टॉल करना होता है, तो डाउनलोड कर लो। मैं आपको और एक चीज दिखाता, उससे पहले डाउनलोड कर रहे हो तो कर लो, उससे पहले इफ यू वांट डाउनलोडेड जेडीके, किसी को डाउनलोडेड जेडीके चाहिए, मैंने मेरे गूगल ड्राइव पे रखी है सब चीजें गूगल ड्राइव पे है ऑलरेडी है। ये सारा बैच नंबर 24 है आपकी, बैच नंबर 24 पे मैंने सारी चीजें रखी है। तो किसी को चाहिए तो मुझे बताओ। शेयर विथ एवरीवन कर दूं क्या? शेयर विथ एवरीवन कर देता ताकि, और मैं ये लिंक भी दे देता आपको। शेयर विथ रिस्ट्रिक्टेड एनीवन विद द लिंक। ओके ठीक है, मैं सबको शेयर कर रहा हूँ। कॉपी द लिंक, डन, और मैं चैट पे पिंग कर रहा हूँ।
6 GB रैम चलेगा विक्रम, 4 GB थोड़ा प्रॉब्लम देता है, 6 GB चलेगा। देखो मैंने एक लिंक पिंग की है जहां से आप जावा 1.8 टू 41 लेटेस्ट 64 बिट का है, प्रॉपरली पढ़ो क्या है। 11 का है, डाउनलोड मत करो आज। ओके, यू कैन डाउनलोड फ्रॉम दिस और फ्रॉम द ओरेकल वेबसाइट एज वेल, वट एवर you feel comfortable. Okay, and let me ping on the chat channel once you are done with the download. From anywhere, कहीं से भी download करो, but please ping me your details that you are done with the download. उसके बाद अपन है ना next step लेंगे। बहुत slowly जा रहे हैं, right? आपने को ब्रेक लेना चाहिए, एक ब्रेक भी लेंगे, बस डाउनलोड कर लो ये। How to check if already downloaded? Okay, ऑलरेडी डाउनलोडेड तो डाउनलोड कहीं भी हो सकता है, बट ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो कैसे चेक करना मैं बताता। विक्रांत, इफ यू प्लीज फॉलो माय स्क्रीन। अगर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है जेडीके, तो अगर यस यप इंस्टॉल्ड, ओके, तो यहाँ प्रोग्राम फाइल्स में जाओगे तो यहाँ जावा दिखेगा और यहाँ दिखेगा आपको कौन सा जावा इंस्टॉल्ड है। ओके, दूसरा तरीका दिखाता, गो टू सीएमडी। सीएमडी कैसे, सीएमडी लिखने का, एंटर मारने का, यहाँ जाने का, जावा हाइफन वर्जन, ये जावा एक्टिव है मेरे यहाँ। आपका चेक करो विक्रांत, विक्रांत जस्ट पुट जावा हाइफन वर्जन, जावा स्पेस हाइफन वर्जन। Okay, now I hope everybody started. Do not install till I give you the instruction. Do not install, just download. Do not install till I give you the instruction to install. Okay, just download. ओके 17 सौरभ, मैं प्रिफर नहीं करूंगा ये जावा, अपन चेंज करेंगे सौरभ, अपन जावा चेंज करेंगे। रीजन बताता, 17 पे ना जावा अनइंस्टॉल नहीं करनी आपको, आपको सिर्फ है ना, आप डू यू नो एनवायरमेंट वेरिएबल, हाउ टू अपडेट द एनवायरमेंट वेरिएबल? यस, ओके, तो अपने को वही काम करना है। करते हैं, आप जावा 1.8 डाउनलोड तो कर लो, अपन वो सबके साथ करते हैं, ठीक है? ताकि क्या है पता है क्या, ये देखो मुझे मैनेज करने हैं 15 लैपटॉप, ओके, 15 ऑपरेटिंग सिस्टम, इफ वी हैव डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम, उनके बाद मल्टीपल वर्जन्स ऑफ एप्लीकेशन, सेलेनियम अलग, जावा अलग, इक्लिप्स अलग, कुकुम्बर अलग, जेनकिंस अलग, टेस्ट एंजे अलग वर्जन, यू नो, मुझे सबको साथ लेके चलना पड़ेगा ना, तो अपने को सारे स्टेबल वर्जन इंस्टॉल करने पड़ेंगे, तभी जाके, ओके, डाउनलोड डन बाय सुप्रिया, तभी जाके ना अपना सारा ऑटोमेशन रन होगा। एंड दिस इज हैपेंस इन द कंपनी एज वेल, जो कंपनी में होता है वही अपन, वही उसी का लाइक प्रिकॉशनरी मेजर्स ले रहे हैं कि वी शुड नॉट फेस अ सिचुएशन वेयर वी आर यूजिंग रॉन्ग वर्जन फॉर ऑटोमेशन। ओके, रजत मिश्रा, कौन सा जावा है भाई? 18 दिख रहा है मुझे कुछ तो, ठीक है रजत, अपन डाउनग्रेड करेंगे जावा। You can use it, but I won't recommend. We will upgrade whenever required. Okay? आप 18 एकदम लेटेस्ट शायद ये बीटा वर्जन है, आई थिंक अब भी रिलीज हुआ है ये, अब भी मतलब लास्ट मंथ आई थिंक। बाय द वे ऑफिशियली we should use only till 17, I guess 17 one of the stable version, but आपका ऑटो अपडेट होगा ना तो हुआ होगा। डाउनलोड डन, ओके गाइस, could you please give me a minute? सब लोग सब चीजें छोड़ के स्क्रीन देखेंगे। लेट्स ऑब्जर्व माय स्क्रीन, लेट्स ऑब्जर्व माय स्क्रीन। ओके, मैं बंद कर रहा हूं मेरा कमांड प्रॉम्प्ट। ओके, लेट्स ऑब्जर्व माय स्क्रीन। ओपन सीएमडी, सीएमडी, ओके, ओपन सीएमडी, दिस इज अ कमांड प्रॉम्प्ट। ओके, ओपन इट। यह टाइप क्या करना है, जावा स्पेस हाइफन वर्जन, और आपका वर्जन चेक करो आपके मशीन पे एग्जिस्टिंग जावा है और वो कॉन्फ़िगर्ड है या नहीं, पहले ये भी चेक कर लेते हैं।
जैसे रजत और सौरभ के पास 17 है, रजत के पास 18 है। और क्वेश्चन का आंसर देता, कैन वी हैव मल्टीपल जावा ऑन आवर मशीन, उसके भी आंसर देता मैं इसके बाद फिर। ओके, शुड आई डाउनग्रेड द वर्जन, अपन करेंगे रजत, साथ में करेंगे। Java 11, Prasad, 11 is also fine, because ultimately we are going to upgrade. You can continue. I would say let's at least one guy who can continue with the Java 11. Prasad, you can continue with Java 11. Okay. If something goes wrong, I will come to know something is not working with Java 11 or something is not working with Java 1.8, and we can figure out and we can differentiate as well, like how Java version matters for automation. Okay, let's continue. I will remember your Java version. Rest of the guys will go with me. Rajat, we will downgrade it. Okay, I don't have, I think say Java is not recognized. Perfect. So you don't have Java. Archana, fair enough. Java is not recognized. मतलब Java है नहीं उधर. बाकी लोग no Java install. Perfect. Perfect. और simple, मतलब आपके मशीन पे Java install नहीं है. Java space hyphen version, no capital, everything is in small. Which Java should I download? 1.8 जो मैंने अभी, ओके सो देखो मैं ये भी डाउनलोड की लिंक देता, ये Java 1.8 ये डाउनलोड करो, या मैंने ऑलरेडी लिंक दी है ऊपर। हु इज दैट? प्रिया, मैंने एक ऊपर लिंक भेजी है, उसमें से डाउनलोड कर लो, वो लेटेस्ट वर्जन ही है, so that you won't be confused, but you need to download from the Oracle website. That's what my point was, and that's why I shared how to download the Java. Everybody with me? Okay, ये किसका पिंग है? Java hyphen version, Java version 18 डाउनग्रेड करेंगे विक्रांत। यार ये क्लोज कैसे करें अब ये? ओके इसको क्लोज कैसे करें यार? ये स्क्रीन पे ओपन हो गया मेरे। zoom I am not a zoom guy. Close icon in the corner, ये वाला, ये बंद ना हो जाए पूरा हमारा। नहीं, I think that's good. Shall I go ahead and click on this one? Yeah. पक्का ना? ओके अरे और एक है क्या? हेलो, कैन यू हियर मी स्टिल? Yeah, yes, I can hear. ओके, एक्चुअली आई एम टीम्स गाय। ओके ठीक है, चलेगा, ये एक काम हो गया अपना। जावा का समझा किसने? मुझे क्वेश्चन पूछा था यार। should I download, which Java should I download? So Priya, are you able to download 1.8 Java either from the link which I have shared or from the Oracle website? Arjuna, so Priya will wait for your confirmation. हाँ, आपने डाउनलोड को लगाया तो भी चलेगा, सिर्फ हो जाएगा वो, जनरली इट टेक्स couple of minutes. Okay, 3 option, which one? 1.8 वाला JDK -8 U 241 मिडल वाला है, देखो ये, देखो ये JDK -8 U, उसको डाउनलोड को लगा दो। ओके ठीक है, डाउनलोडिंग ठीक है, सब लोग डाउनलोड कर रहे हैं, सब लोगों ने वर्जन चेक कर लिया। नाउ द थिंग इज, फर्स्ट थिंग वी नीड टू डू इज वी नीड टू इंस्टॉल। ऑब्वियसली उससे पहले मैं क्या बोलता, जिस ड्राइव में आपके पास मिनिमम 10 GB का जगह है, 10 GB का, उसमें एक फोल्डर बना दो ऑटोमेशन ट्रेनिंग करके, विदाउट स्पेस। याद रखना ये चीज, स्पेस इज वेरी डेंजरस इन लिनक्स। आपका ऑटोमेशन रन करने के लिए फोल्डर पाथ वगैरह देते हैं ना, तो उसमें बहुत डेंजरस होता है स्पेसेस। सो एज अ ऑटोमेशन इंजीनियर और एज अ डेवलपर वी शुड नेवर यूज स्पेसेस। सो एक फोल्डर बना लो ऑटोमेशन ट्रेनिंग या कुछ भी, जो नाम देना है, जिसमें सॉफ्टवेयर रखने हैं अपने को, वो कट कर लो डाउनलोड जहां से की वहां से, और वो सारे, क्योंकि इट विल हैव अराउंड 100 मोर देन 100 फाइल्स एट द एंड ऑफ द कोर्स, वहां बहुत कुछ चीजें रखनी है अपने को, तो वो फोल्डर प्रॉपर बना लो। ओके
So like this one, you can create, for example, it's a radical software or radical data for batch 24. This is what I have created. देख लो मेरा फोल्डर मैंने कैसे बनाया, विदाउट स्पेस, रेडिकल डेटा बैच 24, और वो जो डाउनलोड किया हुआ है ना यहाँ रख दो. ओके क्योंकि आप इधर उधर पड़ा रहेगा, आपको भी पता नहीं रहेगा कौन सा मैंने जावा डाउनलोड किया है, कौन से वर्जन्स मैंने यूज किए, सब कुछ यहाँ रखेंगे, सेलेनियम से लेके सब कुछ. मैं भी रख देता, चलो मेरे पास है बट फिर भी रख देता. लेट्स वर्क टुगेदर. ओके जावा 1.8 का है मेरा, इधर है 64 बिट में. सबने रख दिया. कंट्रोल सी, मैं भी आपके साथ ही काम कर रहा हूँ. डी बैच नंबर 24 का पेस्ट. फॉलो दिस सिंपल इंस्ट्रक्शन, इट विल मेक योर लाइफ इजी गोइंग फॉरवर्ड. शुड आई क्रिएट फोल्डर इनसाइड सी? चलेगा सौरभ, कोई बात नहीं, जहां जगह वहां डालो. सिर्फ एक फॉर्मेट करना पड़ा तो सी ड्राइव फॉर्मेट हो जाता है, तो सारा डेटा चला जाएगा. और उससे वो अगर नहीं होने देना है ना, हर कोर्स मतलब हर वीक के बाद गूगल ड्राइव पे डाल देने का सारा फोल्डर गूगल ड्राइव पे. तो क्या होगा सौरभ की, even after something goes wrong with your laptop, you will still have all the data, all the content. even यहाँ slides रखेंगे अपन, इसके बाद प्रोग्राम्स रखेंगे, कंसेप्ट रखेंगे, सारा डेटा. मतलब इंटरव्यू को जाना है ना, ये फोल्डर ओपन करना है, दैट्स इट. यहाँ ओपन करना है, इंटरव्यू के क्वेश्चन से लेके सब पीओसीज बीओसीज सब यहाँ रखेंगे. क्लियर? ओके. Everybody copied .exe folder to this folder. .exe not folder, file. Anyone pending? मुझे देखने कोई पीछे तो नहीं है, कोई बचा है यहाँ पेस्ट करने से? एक फोल्डर में कंटेंट डालने को कोई बचा है? If you are pending, do let me know. Done? Okay, guys. Okay, so the next step is double click and install. Double click, accept, click next, accept, जो भी आएगा मैं कर नहीं सकता. So better who is going to share the screen? मुझे आप में से किसी की स्क्रीन शेयर करनी है. कोई तो शेयर करो स्क्रीन, कोई भी जिसके पास जावा इंस्टॉल्ड ही नहीं थी. आई थिंक इट्स कौन था, वॉलंटियर है क्या कोई जो स्क्रीन शेयर करेगा? क्योंकि मेरे पास इंस्टॉल है, मैं दिखा नहीं पाऊंगा वो. कैन आई शेयर? यस प्रद्युम्न, गो अहेड. मैं स्टॉप कर रहा मेरी स्क्रीन शेयर, क्योंकि सबको दिखाई देगा कि क्या हो रहा है, कैसे, क्या मतलब कहाँ क्या क्लिक करना है. ओके, सो प्रद्युम्न हैज शेयर्ड द स्क्रीन. गाइज प्लीज ऑब्जर्व द स्क्रीन. डबल क्लिक प्रद्युम्न, आई कैन सी योर स्क्रीन. डबल क्लिक. अपन चेक भी करेंगे कि इसकी ये जावा इंस्टॉल है क्या, क्योंकि प्रद्युम्न के मशीन पे जावा है ही नहीं. वो कमांड प्रॉम्प्ट में ओके ये लॉन्च हो रहा है, नीचे ओपन हो गया है. करो उसको क्लिक. ओके नेक्स्ट, प्रिपेयरिंग टू इंस्टॉल. नेक्स्ट, ये देखो कहाँ जावा, वो देख लो, इंस्टॉल टू प्रोग्राम फाइल्स. अगर ये 32 बिट मशीन होता ना तो प्रोग्राम फाइल्स इनटू ब्रैकेट में 86 लिखा था. Okay, now this is going into the program files, means this machine is 64 and we are installing a software which is 64 bit, and that's why it's a program files. Remember ये जावा यहाँ जा रही है. Go ahead, next. Okay, ये अराउंड 2-3 मिनट लेगी डिपेंडिंग अपॉन योर रैम. रैम अच्छी है, मेरी रैम 16 GB है, तो मेरा लैपटॉप फास्ट चलता है. ठीक है, होने दो इसको इंस्टॉल. और उसके बाद अपन जावा चेक करेंगे कि अपनी जावा हुई कि नहीं. मैं ये भी बताऊंगा कि 2 जावा. ओके नेक्स्ट. नहीं उधर ही करते कंटिन्यू. आई होप एवरीबडी इज फॉलोइंग प्रद्युम्न स्क्रीन. बस नेक्स्ट क्लिक करना है, बाकी कुछ है नहीं. सिर्फ लोकेशन देख लो कहाँ इंस्टॉल हो रहा है, बाकी तो एक्सेप्ट आएगा शायद एंड में. मैं नहीं कर रहा हूँ because I need to stay on 11. Prasad, right? Yeah, correct. Yeah, Prasad, you continue. The reason is we'll observe the behavior of automation on 11 as well later on. Continue with that.
डन, क्लोज। ओके, हाँ, कमांड प्रॉम्प्ट में जाओ फिर से। नहीं आएगा, नहीं आएगा। रीजन इज यू नीड टू हिट करो, नहीं आएगा क्योंकि आपको नया कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करता है। दैट्स अ प्रॉब्लम विथ विंडोज। आप फिर से ओपन करो कमांड प्रॉम्प्ट। बाय गाइस, close your command prompt after the installation of Java and write the same command again. Okay, all set, Pradyum? Okay. Yes, yes. Okay, so what about others? Are you able to see your version in command prompt? Look. Guys, अपन slowly जा रहे हैं. Have patience. Only couple of guys had Java like Rajat, Prasad, Saurabh, but that's fine. अपन next week में ना proper content या फिर proper speed लेंगे. 2 week के बाद अपन अच्छे स्पीड से चलेंगे. I can see in command prompt. Perfect. Thanks, Mahesh. ओके, तो ये हो गई सबकी जावा. और किसी का इट टेक्स टाइम होने दो. आई थिंक Redmi Note 9 is a Surbi, I guess. Surbi, I think. No, Surbi. No. Yes. Okay, ठीक है. Surbi आपके 3 लॉगिन हो गए हैं. Surbi yes and Redmi Note 9 बराबर है. 3 लॉगिन दिख रहे हैं. Not sure why. Installing. Okay, no. तो Surbi के 2 लॉगिन है शायद. Surbi yes, installing. Okay. Okay, everybody with me till this point? Someone else also. Okay. 2 Surbi है क्या? Okay, anyway. So Pradyumna, I'm sharing my screen now. Okay, you can stop sharing your screen. Thanks for sharing, by the way. Okay, I'm sharing my screen again. Okay, so see, ऐसा कुछ Java दिखना चाहिए. Obviously, you need to close the existing command prompt, open new command prompt, and then type, and then you can observe the Java version. If it's still not coming, do let me know. If it's still not coming, do let me know. If it's still not coming, do let me know. डन. आई सी. ठीक है. सुप्रिया, दिख रहा है क्या इसमें कमांड प्रॉम्प्ट में? दिख रहा है प्रॉपर? Okay, yes, I can see. So you have done the installation of Java. Now your machine is ready for with the first basic prerequisite. Anyone having any issue? If not, then we can move ahead. ठीक है. एक काम करते हैं, अपन है ना 5-10 मिनट का ब्रेक लेते हैं. ओके, लेट्स टेक अ ब्रेक. और इसके बाद अपन है ना इक्लिप्स भी इंस्टॉल करेंगे और एक सिंपल सा प्रोग्राम लिखेंगे. मैं आपको कमांड प्रॉम्प्ट से कैसे रन करते हैं वो भी बताता. कुछ छोटी मोटी चीजें और करेंगे. इक्लिप्स में पहला प्रोग्राम हेलो जावा रन करके अपन ने ना सेशन क्लोज करेंगे आज. ठीक है, लेट्स टेक 5-10 मिनट ब्रेक. ओके, आई विल बी बैक बाय 10:20. ठीक है, लेट्स हैव स्मॉल ब्रेक. चलो, बाय बाय गाइज. चालू रखो स्क्रीन, कोई बात नहीं.
Guys, I'm back. Guys, I'm back. I'm back. Just ping me if you are also back. Yes. Okay. 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 What about Mahesh? Mahesh, Saurabh is also back. I think we are 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, I think except Mahesh, I see everyone is back. Okay, so guys, what is next step? What is next step? Now we know like Java has been installed on our machine, and it's reflected in the command prompt as well. The meaning of this is very simple. We have Java, and that is enabled to use by any application. मीन्स यहाँ अगर दिख रहा है जावा, इसका मतलब है कि जावा ऐसा नहीं है कि सिर्फ फोल्डर बना के पड़ा हुआ है. कहाँ? देखो मैंने बताया आपको कि सी ड्राइव में, प्रोग्राम फाइल्स में, ये क्यों जरूरी समझना, क्योंकि आपको करना पड़ने वाला है ये जावा अपग्रेड कभी ना कभी. ये देखो यहाँ 1.8 जावा में, यहाँ इंस्टॉलेशन होने के बाद यहाँ जावा आती है. ओके, now my next question is, can we have multiple Java? And Anil, I can see 2 Java on your machine, JDK 11 and JDK 1.8. मेरे मशीन पे 2 Java क्यों है? And Anil, how can you use Java 11? Okay, so now there is a like valid question on this. Cancer कहाँ गया यार? Okay. General advanced मैं इधर से ही जाता. ठीक है. Anyway, these are the 2 Java. How this Windows system know that we are going to use only this Java? यहाँ command prompt में 11 Java क्यों नहीं आया? क्योंकि मेरे मशीन पे तो दोनों इंस्टॉल्ड है. The reason is this is being driven by the default system. जब कोई भी Java नहीं होती इंस्टॉल, ओके, देन जब हम फर्स्ट टाइम इंस्टॉल करते हैं तो बाय डिफॉल्ट वो जावा पिक होती है. बट दूसरी जावा जब हम इंस्टॉल करते हैं तो लेटेस्ट वाली इनेबल हो जाती है और प्रीवियस वाली डिसेबल हो जाती है. मतलब मेरे पास 8 है, मैंने 8 दिख रही है, यूज भी कर रहा हूं. कल जाके मैंने 11 की, 11 यूज होना स्टार्ट हो जाती है. नाउ आई वांट टू यूज 8 बट आई डोंट वांट टू अनइंस्टॉल 11. देन व्हाट यू नीड टू डू, you need to have Java home variable in the environment variable. ये सबके मशीन पे होता है environment variable. And again you just need to search environment variable. ये विंडो ओपन हो जाएगी. यहाँ पाथ सेट करते हैं. देखो Java प्रोग्राम फाइल्स और JDK 241 ये मैंने सेट किया है. Even though I have latest version or the upgraded version or the new version, तो मैंने क्या किया, यहाँ जाके Java home प्रोग्राम फाइल Java ये सेट किया है और इसका पाथ होता है एडिट. अरे यार एडिट क्यों नहीं आ रहा, बट एडिट, ओके, एडिट. ओके, मुझे फिर से मशीन रिस्टार्ट करना पड़ेगा, लॉक हो गया मेरा मशीन इस यूजर से. ओके, तो यहाँ है ना, देखो Oracle तेरे को मैं दिखा पाया ना तो तुरंत दिखा देता है यार. नहीं दिख रहे मुझे यहाँ, ये पूरा पाथ नहीं दिखा पा रहा ना. बट यहाँ मैंने ना यही पार्ट डाला है, उसमें सिर्फ क्या ऐड किया है, बिन. ये देखो यहाँ दिख रहा है, अरे है ना, फर्स्ट ही है, सी प्रोग्राम फाइल जावा JDK 1.8.0 अंडरस्कोर 241 बिन. इसका मीनिंग क्या होता है, इस मशीन पे अगर जावा यूज करना है तो बाय डिफॉल्ट विंडोज मशीन ये जावा यूज करेगा. बिन फोल्डर में हमेशा कोड होता है बिन में. ओके, अगर मुझे जावा 11 डालना है तो मुझे सिर्फ यहाँ जाके अपडेट करना पड़ेगा, यहाँ जाके अपडेट करना पड़ेगा फोल्डर, एंड देन आई विल बी
able to use JDK 11. Okay, so currently I am keeping this. In future we are going to do the same thing. अपन ये experiment करेंगे once we install JDK 11 during our Jenkins installation, or maybe Selenium grid में लगेगा शायद Java 11. Okay, so this is how you can go ahead and install Java. Now अभी अपन को करना है install Eclipse. अपना फोल्डर कहाँ है? बैच 24 का ट्रेनिंग कंटेंट मेरा बैच 24 का फोल्डर. अरे यार यहाँ रखा है क्या? कहाँ रखा? ओके, ये रेडिकल. अपन ने जावा इंस्टॉल किया, डाउनलोड किया, इंस्टॉल किया. जावा समझ लिया कहाँ इंस्टॉल होता है. जावा के एनवायरमेंट वेरिएबल देखे. नाउ व्हाट इज नेक्स्ट? आई वांट टू राइट द जावा फर्स्ट प्रोग्राम, सो आई नीड अ एक्लिप्स. ओके, चलो ब्राउजर. ओके, बहुत सिंपल है. फिर से उसी वेबसाइट पे जाना है. Eclipse डबल PSC. ओके, डिलीट. सिर्फ Eclipse गूगल में लिखो, पहला ही वेबसाइट आएगा eclipse.org. अब भी शायद कर रहे होंगे, इसलिए मैं स्लोली go through करता. We need to type Eclipse in browser. You will get this eclipse.org website. You need to click on this into new page. Okay, and here somewhere, okay, if आपको यहाँ डाउनलोड के लिए आपको प्रोजेक्ट्स में जाना पड़ेगा. लेट मी चेक फर्स्ट कि यहाँ से कोई सिंपल वे है या नहीं डाउनलोड करने का. अदरवाइज जस्ट टाइप Eclipse डाउनलोड. Eclipse डाउनलोड. ओके, जस्ट Eclipse डाउनलोड. देखते हैं. और सिंपल किया मैंने ताकि आपको नेविगेशन नहीं करना पड़ेगा. दैट्स इट, आ गया मेरे सामने Eclipse डाउनलोड में. JRE. ओके, ये रहने दो, इसकी कोई जरूरत नहीं. अपना विंडोज है क्या? हाँ है. नाउ यू जस्ट नीड टू से 64-bit Eclipse है. ओके, डाउनलोड पे क्लिक करोगे तो ये डाउनलोड हो जाएगा. आपको यहाँ से डाउनलोड नहीं कर रहा है या कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो इफ यू गो टू माय लिंक अगेन, यहाँ Eclipse मैंने, यही सेम Eclipse है. सेम Eclipse मैंने अब भी डाउनलोड किया कल शाम को ही, वो भी पिंग कर देता. Okay, so you can download Eclipse as well from my Google Drive, or I have shown you the website as well. वो भी डाउनलोड का दे देता मैं आपको, वो भी लिंक दे देता Eclipse का. ये सारे लिंक एक नोटपैड करो और यहाँ सेव करके रखो. न्यू नोट टेक्स्ट पैड, यहाँ लिखता इम्पोर्टेंट लिंक्स. मैं देखो क्या कर रहा हूँ. ओके, ये लिख रहा हूँ जावा डाउनलोड लिंक. ओके, उसके बाद Eclipse डाउनलोड लिंक. ओके, लिंक रखने में हर्ज नहीं. इफ यू आर कॉन्फिडेंट दैट यू विल रिमेम्बर थिंग्स, नो नीड. बट इफ यू वांट यू कैन सेव द इम्पोर्टेंट लिंक और यहाँ लिंक डाल दो. जैसे ये लिंक है मेरी Eclipse की, मैंने यहाँ डाल दी क्योंकि इट्स अ ह्यूमन नेचर टू फॉरगेट द थिंग्स. भूलना ये नेचर है. ओके, दैट्स व्हाई वी नीड डॉक्यूमेंटेशन एंड दिस इज व्हाट आई एम डूइंग. Okay, everybody is able to download the Eclipse. Eclipse डाउनलोड होने के बाद वो यहाँ डाउनलोड करना है रेडिकल डेटा बैच 24 के फोल्डर में, या जो भी फोल्डर में आप सॉफ्टवेयर मैनेज कर रहे हो. मैं भी कर रहा हूँ. ठीक है, मेरा Eclipse आ गया. हाउ अबाउट यू? आर यू डन विथ एटलीस्ट copying Eclipse or downloading with Eclipse and putting it into the software folder? Prasad More done. What about other? Yes, I got 2 confirmation. 3 हो गया. Vikrant. Rajat also done. Latest Eclipse ले रहे हैं. Hope it will work. It will work. कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आना चाहिए.
डाउनलोड डन, ठीक है. पुट इट इनटू द सॉफ्टवेयर फोल्डर, जो जिस जहां आपने सारे सॉफ्टवेयर रखने हैं अपने को. डन. ओके. एनीवन पेंडिंग नाउ? आई एम आस्किंग रिवर्स क्वेश्चन. एनीवन पेंडिंग? सो दैट हमें कितना वेट करना पड़ेगा. डाउनलोड डन. ओके. डन. सबका हो गया है, सबका हो गया है. चलो. ओके. नाउ अगेन someone needs to share the screen because Eclipse is already installed on my machine. I want to show other guy that this time who want to share the screen? Anyone else other than Pradyum? Anyone would like to share the screen? Thank you, sir. Is it a Rajat? Prasad. Okay, yeah. Prasad, go ahead. Go ahead, Prasad. Yeah. Okay, so we have downloaded that Eclipse and put it in the folder, and now what we are going to do, we're just going to install it. So you just need to double click. Let's double click, Prasad. Important link. Good. Okay, so you are following complete because this will help you, you know, while preparing the interview. You will find all the content over here. So we want to go for Eclipse ID for Java developer, first or second, anything would do. Let's go with, go to the top. Okay, this is one. JavaScript ID, Eclipse ID for PHP. No, let's go with the first. Okay. Yeah, that's fine. Okay, wait. Java 17 plus VM installation folder. Okay, ठीक है, चलते. Let's install. Accept. क्योंकि मेरा जावा का वो आइकॉन अलग दिख रहा है. ठीक है, कोई बात नहीं, कुछ फर्क तो नहीं पड़ता इससे. But I want you to use Java 11. Let's see. Installing, सबका installation चल रहा होगा. गाइस, कोर्स का डॉक्यूमेंटेशन बहुत जरूरी है. मतलब हम क्या पढ़ रहे हैं, डॉक्यूमेंटेशन. फॉर एग्जांपल जस्ट लिंक्स, ये सॉफ्टवेयर अरेंज करके रखो सब एक जगह. हर वीक के बाद है ना, कोड भी ऐड हो जाएगा. लॉन्च कर दो हर वीक में. यहाँ अपडेट करने का, गूगल ड्राइव पे डाल देने का, प्रोग्राम भी. ओके, सो ये देखो, ये बाय डिफॉल्ट आपका वर्क स्पेस ले रहा है. दैट शुड बी ओके. आई एम ओके विथ एनी वर्क स्पेस. जस्ट मेक श्योर दैट यू रिमेंबर योर ओन वर्क स्पेस. क्योंकि आप मुझे बोलोगे नेक्स्ट टाइम कि मुझे मेरा वर्क स्पेस नहीं मिल रहा है. ओके, या फिर मेरा वर्क स्पेस मतलब क्या, कोड जो लिखने वाले वो कहाँ सेव होने वाला है. ओके, आपका कोड आप कहाँ से सेव कर रहे हैं वो आपको पता चाहिए. Okay, even you can use the similar radical technology folder, Prasad. Yeah. Correct. You can use this select folder. Okay, hold on. Create one more folder. Yeah. Code base, correct. I'm not sure like if otherwise all the projects will be created here only. Code base डाल दो. Project folder name. बस sufficient. Okay. Let's select that folder. Okay, and select that. Launch. This will remain a placeholder where your all code will be stored. और सिंपल हो गया अपना कि अपना कोड भी उसी फोल्डर में है जिस फोल्डर में अपने सारे सॉफ्टवेयर्स रहेंगे. सो दिस विल मेक आवर लाइफ इजी. फुल स्क्रीन कर दो. ओके, सबका ये विंडो जब तक आता नहीं तब तक मैं आगे नहीं बढ़ूंगा. सबका वो विंडो आना चाहिए. प्रसाद, गो टू द प्रीवियस विंडो, लॉन्च टू विंडो, इक्लिप्स वाला. हाँ, बस ये वेलकम टू इक्लिप्स आईडी फॉर जावा डेवलपर, ये सबका विंडो जब तक नहीं आता, देन टिल दैट पॉइंट आई एम गोना वेट, एंड आई विल वेट अगेन फॉर द कंफर्मेशन. I will wait for the confirmation on the chat channel that you are able to open the welcome screen of Eclipse. If you have any challenge, do let me know. आप
कुछ आप do not hesitate to share your screen and get the things done. प्रसाद ने शेयर किया, ऐसा मतलब ये नहीं कि हो गया, आपको चाहिए तो फिर से शेयर करो, अपन फिर से नेविगेट करते हैं, दैट्स आल्सो फाइन. आई टोल्ड यू इनिशियल सेशंस में सब लोग साथ ही चाहिए, मैं किसी को छोड़ के नहीं जाने वाला पीछे. चाहे अपने यहाँ कोई जावा एक्सपर्ट भी होगा तो दैट्स फाइन, बट ही हैज टू वेट, he has to wait till everybody is on the same page. प्रद्युम का हो गया, वेलकम स्क्रीन आ गया मतलब प्रद्युम का. ओके, सौरभ का आ गया वेलकम स्क्रीन. और कौन है? आई एम स्टिल वेटिंग. 2 कंफर्मेशन आया अभी तक. If you are facing any challenges in terms of workspace, code, folder creation, do let me know. Waiting. It is installed solely on my machine due to the low RAM. हाँ विक्रांत, ठीक है, that's fine. That's fine, we are here. हम वेट कर रहे हैं. क्या करना पता है क्या? सारे ब्राउजर्स बंद रखना. प्रोसेसेस चल रहे होंगे ना, टास्क मैनेजर से सारे प्रोसेसेस क्लोज कर देना जो नहीं लगते. ओके, तो दैट विल मेक योर मशीन फास्ट. जो नहीं चाहिए वो क्लोज कर दो. जनरली ब्राउजर्स बहुत मेमोरी लेते हैं. नेक्स्ट वीक वी विल बी ऑल डाइविंग इनटू द जावा. ओके, आप जावा में खो जाओगे लिटरली नेक्स्ट वीक. छोटी छोटी चीजें बहुत सारी अपन कवर करेंगे. आफ्टर दैट यू विल स्टार्ट लर्निंग. एक्चुअली आपको फील आएगा कि आप जावा सीख गए हो उसके बाद वाले वीकेंड में, कि यू विल हैव दैट कॉन्फिडेंट कि अरे यार कर सकते हैं अपन. Okay, I still have only 2 confirmation about the welcome screen on installing Eclipse. It's slow downloading. Okay, ठीक है, Mahesh done. Okay, no problem. So, okay, that's fine. Redmi में आपका नाम क्या लूँ यार, मुझे याद नहीं आ रहा. श्रुति या सुरभि. ओके, ओके, सो दैट्स फाइन. सुरभि होने दो, अभी डाउनलोड ही हो रहा है क्या? टाइम लग रहा है ना. ओके, done. Vikrant done. Installation now. Okay, fine. Go ahead, Archana. If you need any help in terms of installation, do let me know. Okay. किसी को चाहिए हेल्प तो बताओ, अपन फिर से स्क्रीन शेयर कर सकते हैं आपकी खुद की. Meanwhile, would you please tell how to set up environment variable? Yes, thanks for asking the question. Prasad, please stop your screen share. Let me reiterate the environment variable setup. Okay, देखो, see, you have installed 8 Java. You go into the command prompt and you open the command prompt. It will say Java 8 is installed. Fine. Now you installed Java 11 on the top of existing Java. You install Java 11. You open the command prompt. You will see Java 11. Okay, that's absolutely fine. Now the thing is 2 Javas installed on your machine. Now the thing is you want to
run something with Java 1.8. How I can run it? That's the problem. For that, environment variables will come in picture. I have installed two Java, 1.8 and 11 Java, or a Java 8 and Java 11. Okay, 1.8 generally called as Java 8 and 11. Two Javas are installed. Still, I am able to use Java 1.8 previous version, though I have not uninstalled the Java 11. How? With the environment variable. That's what like I'm going into the environment variable. Yeah, environment variable for right. Edit icon नहीं आ रहा, मुझे restart करना पड़ने वाला है machine because I might have logged in with different user. That's fine. System variable. तो yeah. दिख नहीं रहा. Okay. Sorry guys. Let me share my screen again. Okay, नहीं share ही नहीं किया था. Okay, so let me go back. Let me close this everything and let me open environment variable. Environment variable. Okay, now you can see environment variable. What you need to do, one machine can be used by different users and administrator. That's why this is specific for the admin. I want to use all the user those are logging into this machine. Generally अपना laptop पे एक ही login होता है user, so that's why system variable is the best option. So just ignore this. This is also the same, but just ignore this. We need to create system variable with the name Java_home. This will tell the Microsoft operating system Java is installed here. Okay, and whenever any program actually want to run any Java program, or any program wants to actually use underlying Java program, it has to be called from the bin. Okay, so you can see C program files, Java, JDK, bin. If you click on edit on your machine, okay, you will see this table and you will see the variable. Why bin is required? Because bin is having the actual Java code of JDK. So this is the way by यहाँ मैंने 11 कर दिया, 11 यूज होगा. मैंने 12 कर दिया, हाँ 12 कर दिया, Java 12, बट मेरे मशीन पे इंस्टॉल है ही नहीं 12, यहाँ 12 का पाथ ही नहीं है, तो वो नहीं चलेगा, राइट? जो मशीन पे है उस मशीन का पाथ अगर उस वर्जन का पाथ अगर यहाँ दिया तो दैट विल टेक एन इफेक्ट टू यूज बाय डिफॉल्ट विद द सिस्टम. ठीक है, क्लियर महेश? Yes, sir. Okay, thank you. So by the way, how many of you are able to see the Eclipse welcome page done? Archana done, then Supriya done. So Supriya, Mahesh, Surbhi, Vikrant, Pradyum, I think these guys are done with the home page. Rajat, Surbhi is installing, fine. We'll wait because I'm not at all in hurry. If you don't have proper Eclipse setup, how you can write the code? And the thing is, we are creating an ecosystem. Ecosystem means we are creating the learning environment today. Okay, it's not about all the learning. You should enjoy learning. It should not be how to set Java home. Okay, I just explained, but I will explain it again. Environment variable. If by default your command prompt is saying I have in another folder. Okay, so let me explain, Archana. If by default you install the Java and it is reflecting in your command prompt, that's you are done with the everything. Now if you want to change the Java which is by default being used by your command prompt or operating system, what you can do, you need to open the environment variable from this menu. Go here, click on new, put the variable name as Java home and put the path of your Java installed directory, that is JDK, and put the similar path with semicolon at the end. It's a semicolon by clicking on edit, and put the
bean folder path. Just add a bean word with this directory path. Just add bean. You can see, and semicolon. Semicolon will be automatically taken if you are using Windows 10 or plus. Okay. This is this way by which we can say that I am forcing operating system to use this Java to run the programs, and that will start reflecting in your command prompt as well if you open a new command prompt. This is how you can change the Java even if you have multiple installation installed. Clear, Archana? Okay, thank you. Okay, now everybody done with the home page with the welcome screen. तो उसमें क्या करना है, अभी मेरे पास वो वेलकम स्क्रीन नहीं, क्योंकि वेलकम स्क्रीन एक ही बार आता है यार, ये मेरे लेफ्ट साइड पे प्रोजेक्ट है, जस्ट इग्नोर इट. वेलकम के बाजू में वेलकम वर्ड है ना, वर्ड वहां एक बाजू में क्रॉस आइकन एक क्लोज कर दो, वेलकम पेज क्लोज कर दो, एक क्लोज आइकन है, देखो यहाँ समवेयर देयर इज अ क्लोज आइकन, क्लोज कर दो. ओके, सो वेलकम पेज इज क्लोज्ड. Okay, and now you can say that you have created, so not created, you have installed Eclipse IDE where we are going to write the code, and that is not something where you can directly start putting the code. Take 2 minutes to just read this, all the menu and its options. Other than that, take 2 minutes to read the all the shortcuts present on the screen. आपके स्क्रीन पे जो दिख रहा है उसको रीड करो, माउस ओवर करके पढ़ो उसको क्या है. ओके, जस्ट पढ़ो सबको, ये यहाँ भी जाके देखो क्या है. टेक 2 minutes, spend couple of minutes to just understand the UI of Eclipse. सबसे सिंपल टूल है, but still it's new to us. 2 minutes spend करो. I hope you have closed the welcome वाला page. Okay, I hope everybody is spending some time to understand. कुछ करना नहीं, क्लिक बस स्क्रीन देखनी है. इतने सारे आइकॉन है उस स्क्रीन पे ना. ठीक है, ऑल गुड, आगे बढ़ूं. ओके, चलो मैं स्क्रीन पे गया. गाइज, कैन यू सी दिस माय स्क्रीन? आई होप गाइज डू ऑब्जर्व माय स्क्रीन नाउ. लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड हम कहाँ हैं. 2 मिनट अभी मेरे को टाइम दो, सब छोड़ दो. हाँ, सब छोड़ दो, क्योंकि आप व्हाट इज द थिंग इज इन ऑनलाइन, आप एक स्क्रीन ओपन करते हैं ना, आप वही देख पाते हैं. दूसरे स्क्रीन पे क्या हो रहा है तब तक मैं कुछ चीजें बता दूंगा. ओके, जस्ट ऑब्जर्व स्क्रीन, मिनिमाइज योर ऑल स्क्रीन. नाउ द थिंग इज, अपन ने ये देखो अपना लैपटॉप था, लैपटॉप पे जावा इंस्टॉल किया, इक्लिप्स इंस्टॉल किया, और मैं ये स्क्वायर बॉक्स की बात कर रहा था. व्हाट इज दिस स्क्वायर बॉक्स? मैं ये प्रोग्राम्स बोल रहा था. ओके, कि ये प्रोग्राम्स है, मतलब जावा के प्रोग्राम्स है. ओके, जो ये जावा यूज करेंगे और रन होंगे. अभी मैं मेरे इक्लिप्स पे जाता. ओके, मुझे प्रोग्राम लिखना है, बट प्रोग्राम यू कैन नॉट राइट डायरेक्ट प्रोग्राम, यू नीड टू राइट सम कंटेनर. दैट कंटेनर मे हैव 10 प्रोग्राम्स. ओके, मैंने यहाँ जो डायग्राम है उसमें नहीं किया, तो लेट मी डू दैट. ये है आपका फर्स्ट कंटेनर, या ऐसा दूसरा कंटेनर हो सकता है, और भी बहुत सारे कंटेनर हो सकते हैं. कंटेनर मीन्स placeholder directory which is going to hold the
जावा प्रोग्राम, ये जावा प्रोग्राम फिर से, ओके, ये यहाँ जावा प्रोग्राम है, ये यहाँ जावा प्रोग्राम है, ये जावा, ये प्रोजेक्ट 1, प्रोजेक्ट 2, ये जो डायरेक्टरी बोलते हैं ना उसको बोलते हैं जावा प्रोजेक्ट. When we say I am writing some code, you are actually writing some code into the Java project. Project बोलते हैं उसे, word project है. Okay. Now my goal is to make sure that you are aware about this project. Okay. So ये project ढूंढना है आपने. ये black क्यों इतना अच्छा नहीं दिख रहा? ये project है अपना और ये दूसरा प्रोजेक्ट है. ओके, तो उसमें से अभी मैं एक प्रोजेक्ट बनाऊंगा. लेट्स टेक एन एग्जांपल. ये प्रोजेक्ट कब बनेगा? फॉर एग्जांपल आज अपन जावा का कोड लिख रहे हैं, उसके लिए एक प्रोजेक्ट बनाएंगे, सारे जावा के कोड उधर रखेंगे. टुमारो व्हेन वी विल बी स्टार्टिंग विद द सेलेनियम ऑटोमेशन, वी विल क्रिएट अनदर प्रोजेक्ट विद द नेम सेलेनियम ऑटोमेशन. डे आफ्टर दैट maybe we will be starting with the rest assured backend automation project. We will create the another project. So there would be 3 minimum project. आपको घर जाके लगा कि मुझे ये प्रैक्टिस करना है, तो यू विल क्रिएट योर ओन प्रोजेक्ट. यू विल क्रिएट योर ओन प्रोजेक्ट एंड यू विल ट्राई टू सी कि यू आर एबल टू डू सम प्रैक्टिस कोड इनसाइड दैट प्रोजेक्ट. क्लियर? दैट इज समथिंग व्हिच आई एम गोइंग टू डू नाउ. फाइल, डू नॉट क्लिक ऑन योर anywhere on your machine, just observe. I will give you enough time to create the project. See, file, new, Java project. Java project. If you won't find Java project option over here, go to others. At this moment I can see the Java project. क्यों? मैं सदियों से यूज कर रहा हूं, तो क्या हो गया, वो प्रिफर्ड ऑप्शन में चला गया है. ओके, यू मे नॉट एबल टू सी Java project in the first attempt itself, so you might need to click on others. Okay, नहीं आया तो मैं हूं ऐसे, अपन करेंगे. वो मेरा आ रहा है, मैं जावा प्रोजेक्ट पे क्लिक करता. ओके, प्रोजेक्ट नेम मैं देता, देखो क्या नाम दे रहा हूं जो मुझे भी समझे. स्पेस होता नहीं है, स्पेस प्रोजेक्ट में होता नहीं. मैं बोला ना, स्पेस इज अ वेरी डेंजरस थिंग. नेवर यूज स्पेस. डेवलपर शुड नेवर यूज एनी स्पेस. एनी डेवलपर शुड नेवर यूज स्पेस. आई वुड से स्पेस देना ही नहीं, क्योंकि उसका स्पेस का मीनिंग विंडोज अलग तरीके से पकड़ता है, लिनक्स अलग तरीके से पकड़ता है, मैक अलग तरीके से पकड़ता है. एंड इफ यू हैव रिटन automation on any machine, if we want to run that automation on other machine like Docker या Kubernetes में जा रहा है आपको automation, या Linux के कौन से भी मशीन पे रन हो रहा है, तो ये स्पेस बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं. सो नेवर यूज एनी स्पेसेस फ्रॉम दिस डे टिल योर लास्ट डे. रेडिकल जावा देता नाम और 24 करता. बैच 24 है, B24 करता. मैं आपके बैच का नाम देता. पढ़ते हैं पहले. यूज JRE एनवायरमेंट, यहाँ 11 है. आपके मशीन पे बाय डिफॉल्ट 8 आना चाहिए. मैं भी 8 चाह रहा हूँ, या सिलेक्ट कर लो JRE 1.8. क्यों? अपन को जावा 1.8, दिस इज अ वर्ल्ड स्टेबल बिल्ड फॉर जावा. 11 पे मूव होंगे, जरूरत पड़ी तो अपन 11 पे जाएंगे, विल अपग्रेड इट. बट लेट्स गो स्टेप बाय स्टेप. कंपनी में अभी भी 1.8 यूज हो रहा है 90% कंपनीज में. ओके, बाकी के चेकबॉक्स चेक नहीं है, क्योंकि मुझे जरूरत ही नहीं है, मैं ये यूज कर रहा हूँ. डन. ओके, कुछ नहीं करना है, सिंपल. एक ही ऑप्शन सिर्फ मैंने जावा चेक किया. प्रसाद को 11 दिखेगा. अदर देन प्रसाद, एवरीबडी इज गोइंग टू यूज जावा 1.8. फिनिश. ओके, सो अभी मेरी लिस्ट इतनी बड़ी है, जस्ट इग्नोर ऑल द अदर प्रोजेक्ट and let's concentrate on this radical Java B24. okay, see, ऐसा कुछ क्रिएट हुआ है. ये प्रोजेक्ट क्या बोल रहा है, मैंने आपको बताया था वो डायग्राम. ये है ना, ये इक्लिप्स में जो प्रोजेक्ट बनेगा वो अल्टीमेटली जावा को यूज करने वाला है. देखो, ये बोल रहा है मैं जावा को यूज करने वाला हूँ 1.8, जो भी कोड लिखा जाएगा यहाँ. SRC मतलब सोर्स कोड होता है. ये डिफॉल्ट पैकेज, फॉरगेट इट. सेटिंग, फॉरगेट इट. ये इक्लिप्स की सेटिंग है. इक्लिप्स जस्ट स्टोर इट्स सेटिंग इन सम फाइल एंड दोज आर सेटिंग. क्लास पाथ प्रोजेक्ट, जस्ट एवरीथिंग जस्ट इग्नोर फॉर सम टाइम. कुछ नहीं है उसमें से, अदरवाइज अपने को कुछ लगता भी नहीं है. देखो मैं क्या कर रहा हूँ, राइट क्लिक कर रहा हूँ, न्यू पे जा रहा हूँ. मैंने जावा प्रोजेक्ट किया ना, अभी मैं जावा क्लास बना रहा हूँ. होल्ड ऑन, होल्ड ऑन, विल रिपीट दिस थिंग गाइज. ओके, यहाँ लिखता मैं
मेरा जावा का क्लास टेस्ट जावा। ओके, एक चेकबॉक्स चेक कर रहा हूं, ये करेंगे हम, डोंट गेट स्केर्ड। ओके, एक फिनिश कर दिया मैंने। आई एम जस्ट ट्राइंग टू चेक इफ एवरीथिंग इज वर्किंग फाइन। सिस आउट, मैं सिस आउट, सब लोग लिखेंगे हेलो जावा। ओके, ये मिनिमाइज करता, हेलो जावा। दो आइकॉन है लेफ्ट साइड पे, एक ये सेव और एक है सेव ऑल। मेक अ हैबिट टू यूज सेव ऑल। Why? If there are multiple code that you have written and those are independent on each other, not independent, dependent on each other, and if you save only this code, other code won't be saved automatically and it will give you the misleading results. Better to have a habit to save all always. यही click करो हमेशा. Okay, right click, run as Java application. Okay, देखते क्या होता है, सबका आएगा। ये देखो यहाँ हेलो जावा आ गया, मेरा प्रोग्राम रन हो गया। हैव पेशेंस। ओके, नाउ द थिंग इज, मैंने क्या किया पता है, मैं डायग्राम पे जा रहा हूँ। यहाँ का ये प्रोग्राम था ना, ये प्रोग्राम रन किया मैंने, ये प्रोग्राम लिखा, ये वाला ब्लू वाला, और इसको रन किया। कौन सी जावा है इसकी? जावा ये 1.8। नाउ आई हैव वन क्वेश्चन, अनिल यू टोल्ड दैट वी कैन यूज नोटपैड एज वेल, कुड यू प्लीज गिव मी अ डेमो? ओके, मैं आपको वो भी डेमो देता। ओके, सब समझ लेते, यही देता है एक डेमो। न्यू फोल्डर टेस्ट माय जावा। ओके, मैंने ये फोल्डर बनाया, यहाँ रखा, यहाँ से ये क्लास कंट्रोल सी किया, मतलब कंट्रोल वी किया, पेस्ट। ये मैं नोटपैड में भी लिख सकता था, मैंने दिखा था आपको नोटपैड। ये देखो, ये है सेम कोड, टेस्ट जावा वाला, याद है? मैंने अब भी लिखा हेलो जावा। मैं इसको चेंज करता, चलो जावा हेलो जावा 8। ओके, और सेव कर दिया। ये आपको करना नहीं है, मैं सिर्फ दिखा रहा हूं आपको। ओके, तो ये विदाउट इक्लिप्स वाला दिखा रहा हूँ। हाँ, अभी देखो इक्लिप्स को हटा दो बाजू में, इक्लिप्स है ही ना आपके मशीन पे। ये टेस्ट जावा है, डॉट जावा फाइल है, क्योंकि जावा फाइल जावा एक्सटेंशन से ही सेव होगी। टेक्स्ट फाइल में ओपन की मैंने, बट उसका एक्सटेंशन आज भी जावा है, .txt नहीं चाहिए। इसमें क्या है, मैंने अभी कोड दिखाया आपको ओपन करके, कि मैंने उसको एडिट करके ऐड भी कर दिया है। ओके, नाउ व्हाट आई नीड, हाउ आई कैन रन दिस, how I can run this without Eclipse? Let me open CMD. I know my operating system know like where is Java and how to get the thing done. इसको compile करना पड़ता है, Java C test Java dot Java। देखते क्या होता है। एक फाइल बन गई। ओके, इसने एक फाइल बनाई, डॉट क्लास फाइल बनाई, डॉट क्लास फाइल बनाई कमांड प्रॉम्प्ट से। हाँ, बट अनिल आई डोंट सी दैट हेलो जावा 8। ओके, अभी करेंगे हम। ये कंपाइल क्या है, ये कंपाइल क्या है जावा हमने स्टार्ट नहीं किया। टू बी ऑनेस्ट, मैंने जावा का जेबी स्टार्ट पढ़ाना स्टार्ट नहीं किया है, मैं जस्ट सेटअप चेक कर रहा हूँ आपको। ओके, और मैं वही बता रहा हूँ कि विदाउट इक्लिप्स का क्या इंपॉर्टेंस है। आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू इक्लिप्स का क्या इंपॉर्टेंस है। देखो मैंने क्या किया, पहले उसको जावा सी से कंपाइल किया, मुझे पता नहीं उसमें एरर भी क्या थे, अगर होते तो वो भी देखेंगे चाहे तो। अभी टेस्ट जावा डॉट क्लास देखते हैं इसका क्या, could not find टेस्ट, गलत है क्या स्पेलिंग? ओके सॉरी, क्लास क्यों देना है। ओके, कैन यू सी नाउ हेलो जावा 8। अभी मैं जाता, मैं बोलता इसको एडिट फिर से मारता, 8 की जगह 811 किया, सेव किया, गया, मैं बोला रन करो, चलो कोड, कमांड प्रॉम्प्ट से विदाउट इक्लिप्स। अरे फिर भी जावा 8 आ रहा है, बिकॉज आई नीड टू फॉलो दिस स्टेप अगेन। समझ रहे हैं? फिर से मुझे क्या करना पड़ेगा, जावा सी उसको बिल्ड करो, वो राइट करेगा वहां, और फिर मैं जावा, अभी आ गया। नाउ आई नीड टू कंपाइल दैट अगेन। इक्लिप्स ने ये सब कर दिया। ये देखो जावा 8 या मैं 11 लिखा, राइट, सेव, रन। ये एंटर में कोई नहीं पूछने वाला, ये आपको सिर्फ इसलिए पता चाहिए कि अरे वो टूल हम यूज क्यों कर रहे हैं। देखा, यहाँ मुझे कोई कुछ करना नहीं है। And that's the importance of this Eclipse. You can do the same thing to the command prompt। और एक चीज बताता, देखो इस कोड में अगर मैं यहाँ एरर है, राइट, ये एरर है,
ओके मैंने इसको सेव किया और एज्यूम करो ये 100 लाइन का कोड है. ओके 100 लाइन का कोड है. ये देखो इसने एरर दिया, इसने बोला 5 नंबर लाइन पे एक्सपेक्टेड ये था, कुछ तो गलत लिखा है. नाउ यू आई नीड टू गो अगेन देयर, आई नीड टू ओपन दैट नोटपैड, again correct it, and one by one next error will come, then next error will come if program is having a multiple lines. Clear यहाँ तक? Eclipse का importance पता चला आपको? Any doubt so far? Guys, I want everybody to be on the same page, so I hope you are understanding what I'm saying. Understood. स्टार्ट में कुछ भी चीज ऐसी नहीं होनी चाहिए कि आपसे मिस हुई है. क्यों? क्योंकि आप डिस्कनेक्ट होते चले जाओगे ना, चेनिंग रिएक्शन होगा. एक कंसेप्ट ने खत्म, समझ में आया? गुड गुड. आई सी दैट दिस all the guys those are saying yes, they have never written their first Java program and they understood like how it works. कोड लिखना डिफिकल्ट नहीं है, टू बी ऑनेस्ट. कोड लिखना कुछ डिफिकल्ट नहीं है. ओके सो अपन ने यही कोड लिखा. नाउ ये आपको कमांड प्रॉम्प्ट का करना नहीं, आप घर जाके प्रैक्टिस करोगे तब ये करना, जो मैंने अब भी किया है. ओके ये घर जाके प्रैक्टिस करना है. इट्स सॉर्ट ऑफ होमवर्क फॉर यू. नाउ आई एम गोइंग बैक टू दिस. नाउ एवरीबडी विल फॉलो मी. मैं फिर से एक प्रोजेक्ट बनाता हूँ फ्रेश न्यू, क्योंकि मेरा जो गोल था आपको दिखाना कि Eclipse क्यों इंपॉर्टेंट है. ओके वो चीज कवर हो गई. नाउ व्हाट इज माय नेक्स्ट स्टेप? चलो एवरीबडी विथ मी, लेट्स फॉलो मी. फाइल, न्यू, Java project. If you don't see Java project, into the options go and click other. अदर में टाइप करो ऊपर, अगर अदर में टाइप करो ऊपर जावा स्पेस प्रोजेक्ट, अगर आपको डायरेक्टली दिख नहीं रहा तो जावा प्रोजेक्ट है, जावा स्पेस प्रोजेक्ट, ऐसा कुछ यूआई ओपन होगा. हो गया? ओके आपको जो नाम देना है प्रोजेक्ट का, बट मैं ऐसा सोचूंगा कि आप थोड़ा लॉजिकल नाम दो, रेडिकल जावा या ऐसा कुछ नाम दो जो आपको समझे या आपको याद भी रहे. जब आप रिवीजन करोगे ना तो बस वो फोल्डर और ये कोड इतना देख के आपको इंटरव्यू को जाते आना चाहिए. सारी चीजें यही एक ही जगह चाहिए. मैं देता रेडिकल, फिर से जावा, आई कैन नॉट गिव सेम नेम, जावा बैच 24_1 दिया. Select Java environment as a 1.8 since you have 1.8. So Rajat, I hope you have downgraded the Java to 1.8 through environment variable. और कौन था? Yes, sir, I did that. परफेक्ट. और कोई तो था यार, जब मैं भूल गया, किसी का 17 था एक जावा. सौरभ कर दिया, डाउनग्रेड कर दिया 1.8 को एनवायरमेंट वेरिएबल से. परफेक्ट, वेरी गुड. नाउ 1.8 करो. फॉर फ्यू दिस माइट बी वेरी बोरिंग, बट आई डोंट हैव एनी चॉइस. ओके 1.8 दिख रहा है, सिलेक्ट करो उसे, कुछ भी नहीं क्लिक करना है. ये एक मिनट है. ये क्रिएट मॉड्यूल इन्फो डॉट जावा डॉट फाइल, इसको अनचेक कर दो. ये नहीं लगती, इन्फो नहीं चाहिए अपने को कोई, वो बर्डन हो जाएगा अपने लिए कोड छोड़ के. ये मॉड्यूल का है ना, अगर आपके यहाँ चेक्ड है तो अनचेक कर दो. जनरली क्या होता है, फर्स्ट टाइम करते हैं ना तो वो चेक्ड रहता है. ठीक है अनचेक कर दो. अगर आपको लग रहा है कि अरे यार चेक करते हुए ही प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया, नया प्रोजेक्ट बना लो एक फ्रेश फिर से, या उस प्रोजेक्ट को डिलीट कर दो. राइट क्लिक करो, प्रोजेक्ट को डिलीट हो जाता है. एक्सपेरिमेंट करते हैं ना. ठीक है ऑल सेट टू क्लिक ऑन फिनिश. जावा सिलेक्ट हो गया, फिनिश कर दो. प्रोजेक्ट लेफ्ट साइड पे दिख रहा है क्या? देखो दिख रहा है लेफ्ट साइड पे. एवरीबडी विथ मी. सोर्स फोल्डर दिख रहा है, जावा की लाइब्रेरी दिख रही है. Rest of the things can be ignored because those are Eclipse specific setting. Are you with me? Yes. Okay.
यस, थैंक यू। आई डोंट सी सेटिंग्स। ठीक है, इग्नोर करो, नहीं दिख रही, इग्नोर करो, कोई बात नहीं। आपका कोई तो चेकबॉक्स बाय डिफॉल्ट ऐसा होगा कि ये सेटिंग शो नहीं करने का होगा, बट ठीक है, कुछ प्रॉब्लम है तो देखते, मैं शेयर करके देख लेंगे। प्रद्युम्न, आई डोंट सी योर कंफर्मेशन। यस, आई डोंट सी सेटिंग एज वेल, दैट्स फाइन, दैट्स फाइन। कुछ इंपैक्ट हुआ तो देखते। सेटिंग्स इक्लिप्स की होती है, इक्लिप्स अपने पास सेटिंग रखते हैं। कौन सी सेटिंग, ये कौन सा टैब एक्टिव है, कौन सा सेटिंग किया है, वो सेटिंग खुद के पास रखता है। इट्स जस्ट फॉर द इक्लिप्स रेफरेंस पर्पस। सर इन माय प्रोजेक्ट स्पेसिफिक एज ओनली जेआरई, या जेआरई, जेआरई ही दिख रहा है, जेआरई ही दिख रहा है, क्योंकि मैंने जावा पढ़ा नहीं ना, जेआरई क्या है जेडीके क्या है वो बाद में पढ़ेंगे अपन। यहाँ जेआरई दिख रहा है क्या, तो आपका जेआरई 1.2 समथिंग, ये 1.2। ओके, आप बोल रहे हो कि आपका यहाँ जेआरई दिख ही नहीं रहा, जे क्या बोलते हैं, एसडीके, ये एसडीके, एससी मतलब स्टैंडर्ड सर एडिशन। सेकंड ऑप्शन यूजर प्रोजेक्ट स्पेसिफिक जीआरई, वहां पे सिर्फ जीआरई दिख रहा है। नहीं, इसको ये यूज ही वन नहीं करें, पॉइंट नहीं बट ये यूज ही नहीं करें अपन। ओके ठीक है। ओके, इन तीनों में से एक करना है, इग्नोर इट। आपको यहाँ मिल ओके। गया क्या एससी हाँ 8? हाँ, हाँ तो वहाँ पे मिल गया। हाँ तो ये है स्टैंडर्ड एडिशन। देखो जेआरई से भी काम चलता है, अपन उससे ऊपर यूज करें। अपन बोल रहे हैं मैं पूरा लेके आया हूँ क्योंकि मुझे जो चाहिए मैं लूंगा, बट हम जावा सीखे नहीं, क्यों? ये देखो यहाँ है वो चीज, मैं फिर भी दिखा देता यार। ये स्लाइड जब पढ़ेंगे ना अपन, तब अपने को पता चलेगा ये जेडी के क्या है और जेआरई क्या है। ओके, ये पढ़ा नहीं अभी तक, ये नेक्स्ट सैटरडे को देखेंगे, ठीक है? ओके। मैं सिर्फ सिस्टम सेट कर रहा हूँ अभी के लिए। फिर अपन वो जब पढ़ेंगे ना, मैं वो पहले पढ़ा था और ये बाद में पढ़ा था ना, तो यू वोंट अंडरस्टैंड, बिलीव मी। आप वो पहले तो वो समझते ही नहीं स्लाइड, और उसके बाद ये पढ़ा था तो आप बोलते यार वो क्या कंसेप्ट था। उल्टा क्यों है? क्योंकि अभी आप रिलेट कर पाओगे कि अरे यार ये ऑप्शन मैंने क्यों सिलेक्ट किया, ये ऑप्शन यहाँ क्यों आ रहा है। ओके, सो विल सी दैट स्लाइड ऑन नेक्स्ट सैटरडे। सोर्स इज ऑल्सो सिंगल सब फोल्डर। ओके, सब फोल्डर, हाँ एसआरसी दिख रहा है राइट सबको। एसआरसी में कोड कभी नहीं लिखना चाहिए बाय डिफॉल्ट। ओके, मैं ये टेस्ट जावा भी डिलीट कर रहा हूँ। ओके, ये डिफॉल्ट पैकेज भी नहीं चाहिए, नया पैकेज बना रहा हूँ सब। गाइस ऑब्जर्व माय स्क्रीन, आई एम गोइंग टू डू नेक्स्ट स्टेप, आई एम गोइंग टू डू नेक्स्ट स्टेप। क्लिक ऑन एसआरसी, ये एसआरसी जो है उसको राइट क्लिक, न्यू पैकेज, और उस पैकेज का नाम देता बेसिक, बेसिक कोड लिखेंगे आप। ओके, अगेन क्रिएट पैकेज इन्फो डॉट जावा, इसको अनचेक करना है। ये अगर अनचेक पहले किया होगा तो ये अभी भी बाय डिफॉल्ट अनचेक किया होगा, अनचेक ही रखना है। डू नॉट क्लिक बेसिक, बेसिक करके फिनिश कर दिया, सो दैट आई विल राइट द कोड ओवर हियर। वो डिफॉल्ट पैकेज रहने दो, अदरवाइज यू कैन डिलीट इफ यू वांट। क्लियर? सोर्सेज, ओके क्लियर, बेसिक फोल्डर बन गया। ओके, यस डन। ओके, गुड। See how much difficult is Java. You are going to write the program in 2 hours and you have not written a Java code since few years. Okay, now leave everything aside and let's observe my screen. I am going to write the same program again. Okay, ये क्लास क्या चीज है? ये क्लास इज अ एंटिटी। जावा में सुना होगा बहुत लोगों ने, क्लास इज एवरीथिंग इन जावा, मतलब एंटिटी। जैसे ह्यूमन इज अ एंटिटी फॉर पॉपुलेशन, पॉपुलेशन में क्या कैलकुलेट करते हैं अपन, कितने ह्यूमंस है, वैसे ही क्लास इज समथिंग विच विल हैव द एक्चुअल कोड। तो इसको मैं लिख रहा हूं टेस्ट जावा, आपको जो नाम देना है वो टेस्ट जावा। मैं सिर्फ एक चीज क्लिक कर रहा हूं यहाँ, आई डोंट वांट यू टू राइट टुडे, फ्रॉम नेक्स्ट डे यू विल बी राइटिंग ऑल द टाइम, यू विल बी राइटिंग। आज के लिए क्लिक करने के लिए बोल रहा हूँ ये चेक बॉक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है चेक बॉक्स। इससे क्या होता है, एक मेथड बनी बनाई आती है, थोड़ा कोड है ना बाय डिफॉल्ट रिटर्न आता है। फिनिश किया। ओके, तो यहाँ मैं ये डिलीट कर दिया, ये कमेंट लाइन थी। यहाँ ऐसे लिखते सिस्टम डॉट आउट, आप बोल रहे होगे अनिल तो डिफिकल्ट लग रहा है, आउट डॉट प्रिंट ln। ओके, ऐसा कुछ लिखा तो ये आता है हेलो जावा। ओके, बट मैं ये लाइन कमेंट कर रहा हूँ,
आपको एक शॉर्टकट बताता, शॉर्टकट कुछ भी प्रिंट करना है, SYSOUT, कंट्रोल स्पेस, कंट्रोल स्पेस किया ना, आ गया। ओके, ये देखो डायरेक्टली आ गया ये सारा, टाइप करने की जरूरत नहीं रही। इफ यू डोंट अंडरस्टैंड टाइप इट फॉर नाउ, आपको ये फिर से बताऊंगा मैं आराम से। हेलो जावा 8, ये दो ब्रैकेट का मीनिंग क्या हुआ? इसको कमेंट बोलते हैं, मैं डिलीट कर रहा हूं। लेट्स हैव अ क्लीन कोड। ओके, यहाँ कुछ रेड दिख रहा है, लाइन नहीं दिख रहा, सब कुछ ठीक है। राइट क्लिक करो और रन करो। ये देखो, रन एज जावा एप्लीकेशन, रन एज जावा एप्लीकेशन, और रन करो और लेट मी नो हु all are able to run your first program after many years. Done, run, perfect. Hi. Yes, done. Okay, Shruti. Anyone facing any error? I still waiting for couple of confirmation. Who is pending? Priya, Supriya, Priya. Archana. I'm waiting for your confirmation. Supriya done. Priya done. Okay, guys, congratulations. Okay, Vikrant is also done. Good. I'm just waiting for one confirmation from Archana. Archana, you are you facing any challenge? If you want, you can share your screen. Auto populate not happening. Okay. Auto populate किसको किसको नहीं हो रहा? ये देखो यहाँ, ये देखो, इसको कमेंट कर दो। ये कमेंट मतलब this line will won't be considered for, this line won't be considered for execution. ये देखो SYSOUT और एंटर मार दो, ये आ जाता है ऐसा। फिर से लिखता मैं SYSOUT, शॉर्टकट है उसके लिए SYSOUT। ये आप ऐसा नीचे सिस आउट करके आ रहा है किसी को, और एंटर करना है, सबको आ रहा है। किसको नहीं आ रहा तो वो सेटिंग देखते हैं अपन। सबको आ रहा है ऑटो पॉपुलेट, करेक्ट अर्चना? यू हैव वैलिड क्वेश्चंस, but make sure that you type first and run that program. I will show you the how to populate, auto populate. Other guys, are you able to auto populate or sys out? Yes, प्रद्युम्न का हो रहा है, बाकी का नहीं हो रहा तो बताओ, क्योंकि मैं वो सेटिंग बताने वाला हूँ। ऐसे भी sys out not working. Surbi will on it. Observe my screen in next 1 minute. नॉट वर्किंग एट माई एंड, परफेक्ट। विक्रांत देखते हैं और कौन है, क्योंकि अपन ने फर्स्ट टाइम किया ना इंस्टॉल वो इक्लिप्स, तो उसकी वजह से होता है जनरली। अभी मेरा होगा नहीं, क्योंकि मेरा वो सेटिंग भी मैं याद करता। रजत वर्किंग, ओके। श्रुति नॉट वर्किंग, ओके। सिस आउट के लिए ऑटो पॉपुलेट वर्किंग करने के लिए क्या होता है ऑप्शन? विंडोज, विंडोज डन। अर्चना हो गया? ओके, प्रोग्राम रन हो गया यू मीन? ओके, गॉट इट। अभी ये ऑटो पॉपुलेट का सेटिंग बता रहा हूँ। चलो एवरीबडी प्लीज ऑब्जर्व माय स्क्रीन। विंडोज प्रेफरेंसेस एक्चुअली, ओके। यहाँ जावा
प्रेफरेंसेस में जावा, जावा एक्सपांड करो उसको, एडिटर, एडिटर, एडिटर को एक्सपांड करो, प्रेफरेंसेस जावा एडिटर, कंटेंट असिस्ट, कंटेंट असिस्ट, ओके, कंटेंट असिस्ट पे ही क्लिक कर दो। यार मुझे डाउट आ रहा है इसका। ओके, ये है क्या यहाँ वहां डाला हुआ है कि ये देखो तो ये सारी चीजें डाली है क्या यहाँ? ऑटो एक्टिवेशन ट्रिगर फॉर जावा, ये नहीं होगा तो डाल दो, मैं पिंग कर रहा हूँ। और ये कभी लगता नहीं है ऐसा, मतलब ये ऐसा, ये सीखने का जरूरत नहीं है ऐसा। आप बोलोगे कि यार ये भी याद रखना पड़ेगा क्या ऑटोमेशन में, ये लगेगा कि नहीं, ये सेटिंग है वन टाइम एक्टिविटी। ओके, एम्प्टी है, एम्प्टी है तो ये डालो, मैंने जो पिंग किया तो ये लगता नहीं है, याद रखने की जरूरत नहीं है, बट अपन सेटिंग तो चाहिए ना। आप बोलोगे 2 साल के बाद मैंने कंपनी में मैं जॉब लग जाएगा मुझे 100% हाइक के साथ, तो मुझे अगर इंस्टॉल करना पड़ा तो तब गूगल कर लेना। ओके, 2 साल नहीं लगेंगे वैसे, 6 महीना, तब लगा नहीं है तो गूगल कर लेंगे अपन। ओके, नहीं तो मुझे पिंग कर देना। ठीक है, यहाँ डाला, और एक कंप्लीट नहीं हुआ है, मैं अप्लाई वगैरह क्लिक मत करो अभी, यहाँ जाओ। ओके सॉरी, इसको अप्लाई क्लिक कर दो, इसको अप्लाई क्लिक कर दो, क्योंकि ना और एक सेटिंग करनी पड़ेगी आई थिंक। अप्लाई हो गया। ओके, देन व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू फॉलो माय स्क्रीन। टेम्पलेट वाले जावा प्रपोजल से ना, नॉट वर्किंग, रुको रुको रुको, नो रुको उत्पल, सौरभ रुको जरा, एडवांस, एडवांस, एडवांस में जावा प्रपोजल, जावा टाइप प्रपोजल, यहाँ भी क्या है, ये जो मेरे ऑप्शंस है वो आपके यहाँ चेक करो, टेम्पलेट करो, प्रपोजल्स करो, चेक कर लो मेरे ऑप्शन, चेक कर लो स्क्रीन पे आपके, वो सारे चेक करो, अप्लाई एंड क्लोज कर दो, एंड देन चेक इट आउट। अप्लाई क्लोज करो और फिर चेक करो इफ इट्स वर्किंग और नॉट। ये सारे ऑप्शन चेक करने के बाद अप्लाई एंड क्लोज, डन, वर्क्स। ओके विक्रांत, थैंक यू। अच्छा हुआ ये बता दिया कि ऑटो पॉपुलेट, थैंक्स अर्चना फॉर पॉइंटिंग आउट दैट ऑटो पॉपुलेट इज नॉट वर्किंग, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। डन वर्किंग, सौरभ, विक्रांत, थैंक यू। I will wait for other confirmation. Not working, सुरभि, देखते हैं, देखते हैं सुरभि आपका। I hope you have clicked works now. Okay, working. सुरभि बची सिर्फ, प्रसाद का भी वर्किंग है, अर्चना का भी हो गया, प्रद्युम्न का नहीं दिखा मुझे अभी तक, सुरभि, सुप्रिया का भी हो गया। सुरभि, यू वुड लाइक टू शेयर योर स्क्रीन, यू वुड लाइक टू शेयर योर स्क्रीन, करो शेयर, मैं स्टॉप कर रहा हूँ मेरी स्क्रीन शेयर। प्रद्युम्न का भी हो गया, ओनली सुरभि बची। सुरभि, यू वुड लाइक टू शेयर योर स्क्रीन, कर लेते सॉल्व वो, क्योंकि वो बहुत लगने वाला है। इट्स लाइक अ वेरी बेसिक फीचर विच वी आर गोइंग टू यूज फॉर एवरी लाइन ऑफ कोड। सॉल्व कर देते हो ताकि आप सेट हो जाओगे। आई डोंट नो सुरभि, यू आर हियरिंग मी और नॉट। न्यू मैसेज, सुरभि, okay, so you want to share your screen. By the way, Saili, you didn't give me any confirmation on if for since you joined little late, have you followed my course, Saili?
Sahili, can you hear me? Surbhi, please share your screen. Sahili, you there? Okay. Surbhi has started screen share. Okay, hold on. Okay. Everything is going to work. Okay. First of all, delete the line, 11 number line, delete entire line. Delete. Put closing curly bracket, put closing curly bracket. There only, line number 11. Put closing curly bracket. क्लोजिंग करली ब्रैकेट जो ऊपर है उसका अपोजिट कर्लिंग ब्रैकेट डालो. हाँ, और एक डालो, 2. करेक्ट. ओके, अभी एच है ना, एच, हेलो वाला एच, उससे पहले ब्रैकेट के बीच में एक डबल कोट्स दो. करेक्ट, डबल कोट्स दो. हाँ, जावा के बाद डबल कोट्स दो. ओके, ब्रैकेट कंप्लीट के बाद सेमीकोलन दो. सेमीकोलन, ये कॉमा हो गया. हाँ, करेक्ट. प्रिंट आईएन जो लिखा है ना, उसकी जगह आई की जगह यल करो, यल, स्मॉल यल. करेक्ट, हो गया. राइट क्लिक करो पहले, इसको सेव कर लो, लेफ्ट टॉप पे सेव ऑप्शन. करेक्ट, परफेक्ट. राइट क्लिक करो, रन करो, रन एज जावा एप्लीकेशन करो, रन. डन. ओके, अभी 8 नंबर लाइन पे जाओ, 8 नंबर. ओके, यहां लिखो SYS OUT आ रहा है सब. हाँ, करो डबल क्लिक नीचे वाले पे या कंट्रोल स्पेस दबा दो. डबल क्लिक. करेक्ट. उसके अंदर अभी लिखो, डबल कोट्स में लिखो आई लव जावा. करेक्ट, हो गया. रन करो इसे, राइट क्लिक, सेव करो कोड. ओके, आपका सिर्फ क्या हुआ, फॉर्मेटिंग चली गई थी. राइट क्लिक, रन. करेक्ट, परफेक्ट. फिर से ऊपर क्लिक किया है ना, एक काम करो, कंट्रोल शिफ्ट F दबाओ, कंट्रोल शिफ्ट F. कुछ नहीं हुआ. देखो, आपका प्रोग्राम हमसे अच्छा है फॉर्मेटेड नाउ. ओके, सो आपको उसमें से एक लाइन अगर कमेंट करनी है, सपोज आपको 9 नंबर की लाइन कमेंट करनी है, तो 9 नंबर की लाइन के स्टार्ट में जाओ और 2 फ्रंट स्लैश दे दो. करेक्ट, ये हो गई लाइन कमेंट. इट वोंट टेक एनी पार्ट इनटू द एग्जीक्यूशन. रन इट. Done. Okay, so now I would like to frankly hear how you are feeling after completing your first day of your course. How you are feeling. The reason is I would like to understand as well. Like, okay, you can stop your screen share. I'm going to stop here today. The reason is this is enough for today. We will be starting with proper Java from next Saturday. We will again start with a very basic thing. अभी कैसे अपन ने बहुत समझ के लिए अच्छे से अपने को समझा, I hope समझा है, मतलब. तो my goal is next time we'll start with the basic Java programming, which include एकदम सिंपल चीजें, कैसे रन करते हैं, कैसे क्या बिल्ड होता है, ये कंट्रोल स्टेटमेंट्स क्या है, वेरिएबल्स क्या है. ओके, स्मॉल थिंग. उप्स कंसेप्ट शायद नेक्स्ट वीक होगा भी नहीं, उप्स कंसेप्ट का, जिसके लिए जावा जानी जाती है. ओके, तो वो शायद नेक्स्ट वीकेंड होगा भी नहीं, बट उससे पहले अपन बेस बना लेंगे अच्छा वाला जावा का. जैसे आज आपका है ना, एनवायरमेंट का बेस बनाए कि आपको समझ आ गया होगा कि हाउ थिंग्स आर गोइंग टू वर्क, व्हाट आर द डिफरेंट टूल्स, टेक्नोलॉजी रिक्वायर्ड, राइट. हाउ वाज योर डे टुडे?
if you could ping or say something like, are you feel confident little bit? I tried my best so that you won't lose your confidence first thing. And the thing is, if you already know the Java and basic things, I know I told you, like, I want to take everybody on the same page, right? And that's what my goal is, and that's what I'm trying. So have patience if you already know the thing. But the thing is, guys, believe me, lot of things. Imagine we are going to learn 100 hours almost. This is the first 3 hours, or not 3, 2 hours. Okay. In 100 hours, what you are going to learn? You learn already basic things about Java, installation, versions, Eclipse. Can you imagine what will happen after 100 hours, and what will happen after you do the practice? Things are going to change. Got good understanding of environment setup. Good. Okay. ये अपन ने बहुत ही slow start किया है. But things will change, and we'll have the lot of good things coming up. Okay. I don't want you to lose confidence. That's what my goal for today, and I tried my best. Assignment. मैंने कमांड प्रॉम्प्ट से रन करके दिखाया था ना, घर जाके रन करना है आपको, खुद पढ़ाई करके कि हाउ टू रन कोड थ्रू कमांड प्रॉम्प्ट विदाउट इक्लिप्स. आपको घर पे ट्राई करना है. ओके. ये यही करना है बस. क्यों? क्योंकि अभी आपको असाइनमेंट कुछ दे ही नहीं सकता, क्योंकि कुछ कंटेंट ही नहीं किया है. बट ट्राई टू अंडरस्टैंड डिफरेंट वर्जन. एनवायरमेंट वेरिएबल क्या है, पढ़ लो. ओके. एनवायरमेंट वेरिएबल क्या है, जावा कहाँ इंस्टॉल हुई है, आपने जो डाउनलोड किया वो सारा एक फोल्डर में डाउनलोड किया है क्या? मैंने अगर आपको कल बोला कि इक्लिप्स ओपन ही नहीं हो रहा, राइट? इक्लिप्स ओपन नहीं हो रहा, बट आपने जो कोड लिखा है वो मुझे नोटपैड में ओपन करके दिखाओ, आपको वो आना चाहिए. और मैं ये पूछने वाला हूँ, सबको पूछूंगा स्क्रीन शेयर करके. ठीक है, आपने ये कोड लिखा, इक्लिप्स बंद करो, वही फाइल मुझे नोटपैड में ओपन करके दिखाओ, क्योंकि आपके मशीन पे ना हो. तो ऐसे कुछ चीजें, क्वेश्चन के आंसर ढूंढो ये वीक. नेक्स्ट वीक जावा होगा, जावा के प्रॉपर असाइनमेंट आएंगे. ऑल गुड? Why to use reasoning clear all concept? Thank you. Okay. Why, sir? Yes, sir. Why to use what and reasoning clears all the concept? Good. Thank you. कौन है? Archana. Thank you. Thank you, everyone. Thank you. We'll make sure that we'll have more interesting session. मोर इंटरेक्टिव. इस बार आप बात नहीं कर रहे हैं, बट धीरे धीरे सब बात करने लगेंगे. वीडियो चालू रखा तो और भी अच्छा है. मुझे लगता है कि मैं किसी के साथ बात कर रहा हूँ. ओके. नेक्स्ट टाइम इफ पॉसिबल आप वीडियो भी चालू कर सकते हैं. ओके. बिकॉज वो मुझे चेहरे देख के ना एटलीस्ट एक्सप्रेशन तो पता चलेंगे कि कभी कभी सर के ऊपर से भी जाने वाला एक चीज एक दिन आएगा कि आपके सर के ऊपर से जा रहा होगा कोड कंसेप्ट. ओके. तो does it affect later? I have 21 version of Eclipse. कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा. चलेगा सौरभ, गो हेड. और कुछ प्रॉब्लम आया ना, अपन 15 मिनट में अपग्रेड कर देंगे. ओके. ओके. तो हाँ, ऐसा सिचुएशन आएगा जब आपके सर के ऊपर से जाएगा, तो उस टाइम चेहरे से मुझे ज्यादा पता चलेगा कि समझ में आ रहा है कि नहीं. ओके. सो आई वुड प्रिफर टू हैव वीडियो इनेबल्ड. बाय द वे, इफ पॉसिबल कैन यू गाइज इनेबल योर वीडियो? आई वांट टू सी लाइक कौन है मेरा ऑडियंस. if possible. If you are not in that position to open, कोई बेड पे लेट के कोई लाइक देख रहा होगा, मतलब चल रहा होगा वो काम. ओके. हाय विक्रांत. हाय अर्चना. थैंक यू. हाय सौरभ. सुप्रिया. प्रद्युम वीडियो नहीं दिख रहा, कुछ तो बीच में आ रहा है. ओके. हाय प्रद्युम. हाय. ओके. हाय सर. हाय. ओके. चलो सही, अच्छा है. चेहरे दिख के है ना, तो एटलीस्ट किसको पढ़ा रहे हैं वो पता तो चलता है. और कौन बचा है? सुरभि. ओके. प्रसाद. हाय प्रसाद. Prasad, by the way, Prasad is in US. It's like it's 11:30 at night, right, Prasad? You're on mute, by the way. Yes. 11 बजे. 11 बज गए ना. ओके. ठीक है. ओके. सो थैंक यू एवरीवन. सो अपन कंटिन्यू करेंगे. बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत चीजें इंटरेस्टिंग है. जावा कैसा है अपने को पता है, नाम पता है, थोड़ा प्लस माइनस पता है, तो आपको लगेगा अरे मतलब कुछ चीजें पता है. जिनको पता है ऑलरेडी उनके लिए, बाकी लोगों के लिए नया रहेगा. सो दैट्स व्हाई लाइक हाउ पेशेंस, लॉट ऑफ डिफरेंट कॉम्प्लेक्स
वर्किंग कंसेप्ट, वर्किंग मीन्स कंपनी में जो लगते हैं वो कंसेप्ट अपन यूज करेंगे. गेट, गिटलैब, डेवऑप्स, जेनकिंस, कुकुम्बर, एपी ऑटोमेशन. जो दिखता ही नहीं उसको ऑटोमेट करना है. ओके, सो वी विल हैव अ डिफरेंट, altogether different philosophy and understanding about the subject. हाउ पेशेंट आज मैं थोड़ा मतलब, और मेरे में बहुत एनर्जी, मैं 4-5 घंटा आराम से ले सकता हूँ. आई यूज टू टेक 3 बैचेस सिंस 8 in the morning till 6 p.m. on Saturday, Sunday after my 5 days of working. So I have a lot of energy provided you are available. Okay, ठीक है, चलो नेक्स्ट सैटरडे मिलते हैं. जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, they have to go and do the registration, get in touch with Swapnil, so that क्या हो जाएगा, वो पोर्टल पे आप ऐड हो जाओगे. वहां ऐड नहीं, वहां आपको कोई जूम मीटिंग सेंड करने की जरूरत नहीं. प्रसाद, यू कैन गेट इन टच विद स्वप्निल मे बी टुमारो, इट्स टू लेट फॉर यू. तो वो पोर्टल पे एक्सेस आ जाएगा, वहां सारी डिटेल रहेगी, इंक्लूडिंग कंटेंट, इंक्लूडिंग नेक्स्ट जूम सेशन का लिंक, सब कुछ है वहां उस पोर्टल पे. बट रजिस्ट्रेशन करने के बाद उसको एक्सेस हो जाएगा. और इवन अपने कंटेंट रिकॉर्डिंग वहां अवेलेबल रहेंगे. आपको जब भी चाहे तब आप है ना उसको रेफर कर सकते हैं. ठीक है, ओके, चलो बाय बाय देन. Any doubt, anything you have, you have my number, WhatsApp call, you can go ahead and connect with me. ठीक है, चलो bye bye, take care. Bye. Anil, I have one question. Yeah, Rajat. Pradyumna here. Pradyum, go ahead. I have basically two questions. The first question is that now we are actually learning the Java, and we are eventually will create a framework and then we'll execute the scripts. But it may happen that in the industry actually the framework is already existing. It not may happen. It is going to happen for the 99.99% cases. Yeah, so it will be available, and then we need to maybe perform a reverse engineering and then correct. understand bits and pieces. So are we planning to have some different framework which is already there and understand? Okay, so different framework I have, but my code is secured, and that belongs to Office, which I can't share. But still, I have written one framework around a year back. I have written one framework on the live application, and that was something like what we call, I was doing support, technical support to one of the company, which is not my parent company or payroll company. But few guys, technical guys, contacted me for automation framework support, and for them I have written one framework. Okay, but again that is authorized framework because I have handed that framework to them and they have paid me. Okay, so the content will remain authorized to them. Still, I will show you that framework to you guys. I may not be able to share the code, but let's see how it goes. If you guys are going to give me the guarantee that you are not going to use that code somewhere into the social channel or anywhere, then maybe I can share that code as well. But it's a live framework. It was a live framework which was written from the scratch 1 year back. It took 3 months for me to make it running, working situation with all the aspect. It was Selenium automation. Okay. Fine. Pradyum, and you about to ask me second question. Yeah, second question is that are these sessions are recorded and we can see the recording? Okay, I think it should be. It should be because if you see on the left corner, sessions are recorded and only authorized person can go ahead, and that's why you need to do the registration, and that portal will hold all these sessions. Okay. Got it? Thank you. Yeah. Thank you. Okay, if not, let me see if what can be done. Yeah. Okay, but it should be because the recording is already, I see it's already started. Yeah. Okay, all good then. बचा हुआ weekend enjoy करते हैं फिर. Okay, चलो, see you next week. Yes, Bye bye. thank you. Yes, bye. Bye. Yeah, fine. Thank you.